Yes, sir. Very much clear, sir. Very much clear. Okay. Thank you very much for Sir. introduction. And no, I welcome you all for this NEP program. I am Dr. Sirsat, as introduced by. Not visible, sir. Sir, you are muted, sir. You are muted. Please unmute yourself. Okay. Yes, sir. Yeah. Now, I think you can hear me. Yes, sir. Very much better, sir. Okay. Good afternoon, everyone, and thank you for introduction. As I was introduced, I'm Dr. Sirsat from Goa University. I'm also looking after my MMTTC center here in Goa, and many from Amravati actually come here to do the courses. We are currently running a refresher course. We just conducted the faculty induction program, and for which many people come from Amravati area. I also visited Amravati a few times, Amravati University. Thank you to the director and his team for inviting me to conduct a session here. So what I'll do is I will share my PowerPoint with you and see whether it is visible to you and my mouse is visible to you. Is my slide visible to you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Is my mouse changing position? Can you see that? Yes, sir. Excuse me, sir. Sound is not audible, sir. I'm not audible. So Yes, sir. you are audible and your slides is also visible, but it is not changing, sir. It won't change. It will change like this. Is it changing Yeah, now? sir. Yeah. Now it is Okay, also good. Okay. So Okay. what I thought, I will talk on something on skill development, which will be useful to all the teachers and those who are involved in research. Okay, skills in some kind of data analysis and visualization. Nowadays, an important topic. Okay, so I'll just go to my first slide. You see two pictures on my slides, picture A and picture B. Can you please tell me which picture needs a skill? You can write a message also. Balancing, sir. One is Picture B, sir. So picture B, as you can see, is a person who is walking on the rope, balancing himself with a stick. And there is another picture called picture A, in which there is a person nicely dressed. He is walking maybe in the garden on the road. So picture A is quite common picture, and picture B is not that common. The person who is walking on the rope may not know the science behind it. He may not know the physics behind it. He may not know the equation of balance and things like that. But with the practice, he has developed a skill which is helping his life. He attracts people around him. Picture A may not attract people around him. So it's my appeal to all the teachers to actually develop a skill which will attract students to your class. So all the teachers, I request, irrespective of the subject you are teaching, practice, develop a skill in a presentations, the way you present yourself, the way you present the topic, the way you present your lectures, so that the students are attracted to your class. Nowadays, students are not coming to the classes. There are various factors, there are various reasons, but it is a teacher who can make the teaching interesting and teach something which is not there in the videos, which is not there
in the books and something which is important for the students. And the students, you see, they'll be attracted to your classes. Otherwise, it becomes monotonous, it may become boring, and people may not come to the classes. Then I'll go to the second picture. In the second picture, again there's a picture A and picture B. Which is simple? Can you tell me which one is simple? A. A. So you see picture A is a common person riding a bicycle, and picture B is riding a unicycle. B is difficult, but for the person it is easy because he has developed a skill. For skill developing, you need to do a practice. It cannot be taught in theory classes. It comes with a practice. You cannot swim outside the water. You have to enter the water. You may be afraid initially, but afterwards it may becomes very, very easy for you, and you can actually enter and do things, attract people towards you. Okay, so many times now I saw or I see people are presenting in the PowerPoint. Is there any limit on the number of slides on the PowerPoint? Is there any limit on the number of slides using PowerPoint? Those who are using PowerPoint, I just So ask a question to them. मी Is there प्रश्न any विचारला limit? PowerPoint ची काही लिमिट असते का किती स्लाइड बनवता येते PowerPoint स्लाइड बनवताना काही लिमिट आहे का नंबर ऑफ स्लाइड्स वर? Only 20 slides, only 100 slides, only 50 slides, any limit? Is there any Yes, limit? sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the limit? How many slides? Yeah. How many 25 slides to you can 30. make? 25 to 30. No. Actually, sir, it depends upon the topic and time of presentation. Yeah, Dr. Puranik, Kundalik. it is your limit. PowerPoint does not give any limit on the slides. It is you are saying for 10-minute presentation, there should be 10 slides like that. No, PowerPoint does not give any limit on the slides. So what I saw when people are making presentation, they put so many things on the one slide, so many things. Not required. You can make different slides. You can make your presentation very, very clear. You can make the largest font size. Don't put so many things on one slide. Whereas you can make number of slides more number of slides. Okay, so this is my third slide. Put some kind of slide number on your slide. Okay, don't put too many things on the slide. Okay, so I'll just go to my one slide. I'll just present certain things, certain features through my presentation to you. I will also tell how topic can be taught. That is also important things through my presentation now. Then, now see, I show some pictures to you. The first picture here, where my mouse is there, you must have seen when you're driving on the highways, national highways, oh, there are cameras on the highways. And these cameras are taking your data. What is the speed of the vehicle? What is the vehicle number? Where is it registered? Whether it is following rules or not. All the data is recorded or taken about you without taking your permission. That is very, very important. So your data is taken without your permission. Nobody asks you, shall I take your data? No, it is taken without your permission. The second picture you will see, and you see this data is very, very huge. There are large number of vehicles on the roads at a given time. And all that data is collected. Data is processed, analyzed, and used for earning money or having a smooth traffic on the road. The second one is very common, is a biometric machine. In front of every office,
or institution, there will be biometric machine. And now here you touch the screen or you stand in front of camera and give the permission, your data is recorded. First one without your permission. Second one with your permission. Third one. The third one is you are giving your blood to pathological labs. Then this blood, when you give a blood, your data is collected. They know, they will analyze this data. They know what are the things you have in your blood. And next time when you come, your old data is also there, report is also there. This is with your permission. Another thing I'll show you here, somebody is recording some data about microorganisms, which cannot be seen through naked eyes. Oh, they are recording that data. Another important thing here, if you see, nowadays every young person will have some kind of dash cam in his car. Dash cam has become very, very common. And without taking anybody's permission, this dash cam will be recording everything what you can see during the journey. This dash cam is like a third eye. Shankarada Tisra Dola, third eye. It is recording everything. Something which was not seen earlier now can be seen without this. Oh, this can be proof for an accident. Some accident happened, some tiger crossing the road, some landslide happening. Oh, this can record everything. And that can be sent to the news and things like that. Then, nowadays, yesterday we saw a cricket match. When we see cricket match, we see graphs like this. And we understand the progress of the match. Sometimes we see a table like this. We understand the progress of the match. Nowadays, this data is there everywhere. It is collected without taking any permission. It is analyzed and it is processed and trends are understood. Very, very important. I'll be talking something like this during my lecture. Data visualization, data analysis, and getting a meaning out of the data. Data means everything. Today's my lecture is also a data. Your attendance is also a data. If you keep video on, that is also a data. Very, very important in NEP. NEP, 100% attendance is compulsory. Do you know that? In NEP, to get a certificate, there is 100% attendance compulsory. And this data is recorded automatically. Your attendance is recorded automatically. Your responses are recorded. Okay, so please note that. So when I say data, then I need to do some terms. Data need to be collected. Collection of a data is an important thing. Data can be generated. One can generate a data. I'll talk to that. Come to that. Then you can do this by observations. All observations can be recorded and data can be recorded and summarized in some form or loaded somewhere like that. And then we need to do analysis of the data. Once you do analysis of the data, you can also make new things. New things can be done with the data. Predictions can be done. A synthesis can be done. You talk about nowadays world called AI. AI takes something, analyze, and gives you some new answers. So that is like a generative AI, and synthesis is a common thing. Then I'll be talking on data analysis throughout my lecture, but in a different way. You will see that you are learning something new, and you can try this at home. Okay, so data analysis, as we said, collection of data is important. Validation of a data, whether the data is correct or not, that is also an important step. Nowadays, people collect the data using Google Form. Google Forms are there, and people just enter the data. Whether it is correct or not, that need to be seen. Then data need to be consolidated, summarized, and that can be summarized in the form of a table. When you talk in terms data in the form of a table, which is the software comes to your mind? Which software comes to your mind?
data in the form of table? Anyone? All this data, when presented in the form of a table, which is the software you think? Excel sheet. Yes, very, very common. Excel sheet. So you can see that, oh, nowadays people don't use Excel sheet, they use a Google sheet. Something similar to Excel sheet, but more powerful. Google sheet is there in every phone. Every phone, everybody is having a phone nowadays, and every phone will be having a Google sheet. My request to you, please open Google sheet. No money, it is available. Start using Google sheet. Your life will be simple. Start using Google sheet. I use Google sheet for many, many things. Our students are also using Google sheets for many, many things. And day-to-day life becomes easy with the Google sheet. Okay, then. With the Google sheet, it is possible to visualize the data. Some columns, some numbers can be put some colors. And data can be visualized. Something less than that, something more than this. Or you can put colors. And table can be visualized in a better way. You can make something bold, something colorful like that. You can do formatting, conditional formatting, and do things better. So that may use for visualization, but data is better visualized in the form of a graph. So you may visualize the data in the form of a graph. Graphics visualization is a popular visualization. People actually don't want to see the table. People want to see a graph. Okay, so the table is a huge amount of data. A graph is a one page of data, one page. Graph is one page. Table becomes very, very huge. Next, once you have a graph, you can do predictions. So prediction is an important part of data analysis. One can do predictions. And that predictions can be done with the help of equation. So in the data analysis, there are three very, very important terms. One is a table, a huge amount of table, huge amount of space. Another is a graph, one page of a space. Equation is one line of a space, one line. So I can say that equation is a summary of a data. Equation is a summary of a data. All these things need a skill. Data analysis, nowadays, people are paid huge amount of money because it needs a skill. I'll tell you, every analysis needs a skill. Now, these three things, table, you can collect a data, make a table, plot required graphs, and generate a equation. So which one is important now? Which one is important in data analysis? Table, graph, or equation? Which one is important in data analysis? Table, graph, or equation? So you can see that equation is a Equation. summarized data. In a short, it's it doesn't take a memory. It's a one line representation of a data. So the table is also a data. A graph also is a data. Equation also is a data. Everything. One can get a table. One can get a graph from the table. Equation can be obtained from the graph, or otherwise, once you have equation, you can make a table and you can also go to a graph. So equation is on something which is important. Which one is easy? Which one is important? Why? The second one, going from equation to table to a graph is an easy thing. From table, then graph, equation is a difficult thing. That's what I was telling you. Walking on the rope and walking on the road. Easy and difficult. So the first one is difficult. The second one is easy. The first one needs a skill. The second one does not need that much skill. Let me go to the next one.
I'll be talking to you a little bit analysis of a data or analysis of a system. Synonymous word, system or data, same thing. Data analysis or analysis of the system, same thing. Now, this analysis can be divided into two types. One is the original data or the sample is not available after the analysis. The original data or the sample is not available after the analysis, or the original sample gets changed. It is changed in the analysis. Therefore, I put a red color. Red color means danger. I lose the sample. Sample is lost after the analysis. Another way of data analysis is in which the sample is not changed in the analysis. Sample is not changed. Sample remains same and you get analysis. Many examples. Many examples. Okay, many examples are there. Which one is important? Out of the two, purposely I put a red color and a green color. So as you can guess, analysis in which sample is not changed is important. Because I want a sample back. Sample can be used for something else. So that's very important. Original data should not change. Original data should not change. You can do the analysis. No problem. Nowadays, if a police is asking you a license, then he may take your license and then trouble you. So what you do? You show him the license in M-Parivan software using mobile. He cannot take that. He can only see. He can only verify. He can only see, verify whether it is expired or not and give back to you. So that's very important. Let me take a data analysis or sample analysis. So if I have some data, maybe numerical data may not be always numerical. If I have some numbers and I do some analysis, evaluation, I may find out minimum of a number, maximum of a number, average of a number, standard deviation, all those things I may find analysis. But while doing that, my original data is not changed. My original data remains same. So data analysis is a very classic example of a green analysis. Green analysis, not a red analysis. Nothing happens to my data. So if I give you two numbers, 3 and 5, then you can add 3 and 5 is 8. So you get a new number 8. But nothing happened to 3, nothing happened to 5. Original data is there. Original data remains same, like that. Let me give an example of analysis, data analysis. Very classic example. I am giving an example through a medical science. Let us say there is a person, and he is having some problem in his body. And doctor want to analyze. Doctor want to find out what is the problem. He said there is a pain, unbearable pain in my body. He goes to the doctor. Doctor tells that looking at you, I cannot tell anything. Please go and take an X-ray. So he takes an X-ray. Please tell me, if X-ray is taken, is there any change in the original person? If the X-ray is taken, this is the X-ray. Now this is the original person. Is there any change in the original person? No, sir. Yeah, you see there is no change in the original person. No change. And this is a data, another data. So original person is also data. This X-ray is also a data. So this is called data transformation. Data transformation. And doctor understands this and tells this person, please take this medicine, please take this physiotherapy, do this massage, like that, and you will be okay. Or you may need an operation. So this is X-ray is also a data. Original person is also a data. And this is the analysis, data transformation. So for data transformation, data analysis, what I need?
What I need is a machine. In this case, X-ray machine. What I need is a technician, person who can handle the machine. And what I need is a doctor who is expert, who can see the analysis. So data analysis needs a machine, very, very important. And data analysis needs expertise, person. Now I'll give you another example. Same can be there for CT scan. One can take a CT scan. Another example. One can take MRI. Another example, MRI. One can do a sonography. Oh, many, many things. ECG, medical examination, medical analysis. Those are all green analysis, green. Nothing happens to the person. Very, very important. But needs a machine, needs a expertise for data analysis, for analysis of the system. So in this, what is important is sample is not changed in the analysis. Original sample. This is the sample now. The sample is not changed in the analysis. And information, that X-ray information is obtained without disturbing the system. Information is obtained without disturbing the system. Is it okay? Original data is not changed. Original system is not changed. But the analysis is done without disturbing the system. Is this okay? Yes, Yes, sir. sir. Very, very important. You are not supposed to change the original things. Oh, but you do analysis. You do analysis. Okay. Next, another example. Now you see a picture, may not be very clear. This is the picture of the answer sheet. When the students answer their main exam, they are given a booklet. On the front page of the booklet, they will write their information: date, paper, center, name, roll number, all those things, invigilator, everything they'll write. And inside they will write answers. Okay. And this answer paper needs to be evaluated. This is the data. What kind of data? In the answer paper, oh, there is a numerical data. Numbers are there inside. There are text. Students have answered the questions. So there is a text. Maybe 3-line answer, 4-line answer, 10-line answer, like that. Maybe they have solved the problem, numerical data. Maybe they have drawn some schematic diagram. So there can be images, there can be figures, there can be graphs. So this answer sheet is a very, very classical example of a data. And you need to analyze this data. And once you analyze this data, it tells me something. What it tells? It tells me whether the exam was difficult, whether the questions were difficult, which question was easy, which questions are answered by most of the students, and things like that. So this data analysis gives me a student's feedback. Very, very important. It gives me a student's feedback. I can do statistical analysis of the student's feedback. I'll take this example. This example I have taken because most of you are teachers and you must have done this analysis. Let me take this now. Let me say that the answer paper, schematic diagram, answer paper. Let us say that it goes under evaluation. The answer paper is evaluated. After evaluation of the answer paper, I get total marks and I also get answer paper. Please try to visualize this. I have the answer paper. I give it for evaluation. Now it is evaluated by a machine or by a person. Mostly it is evaluated by teacher. Now the teacher will give me the total marks and nothing will happen to the answer paper. Answer paper will be same.
I write in a different way. I try to visualize in a different way. Same thing, I try to visualize in a different way. Please see my slide. My slide has a minimum content, not many things. Now, I'll give an answer paper. This answer paper, after giving for evaluation, I get total marks. That is the important thing. I visualize this way. Paper is not changed after the evaluation. Answer paper is not changed after the evaluation. And total marks or the information is obtained without disturbing the system. Please try to visualize this. Original answer paper does not get changed. No answer is added. No answer is removed. Original answer paper does not get changed. But you can get total marks. So this is a green analysis. Data analysis is a green analysis. Try to visualize this now. Answer paper evaluation. Answer paper is there. Oh, there is somebody called examiner. This examiner will evaluate the answer paper, and once the work is done, he will give the total marks. He will also give me the answer paper. Try to visualize this. An examiner will analyze the answer paper. He will give total marks as well as the answer paper. So there is no change in the answer paper. This analysis is a green analysis. Green analysis. Very, very important. Green analysis. Therefore, paper is not changed after the evaluation. Information or data is obtained without disturbing the systems. That's what we need to check. We want to do analysis without disturbing the system. That's the important part in this skill. You are not supposed to change original things. Let me put it down. Answer paper. P stands for answer paper. E stands for examiner. Done. I get total marks. And I also get answer paper. Now what I did, I just wrote an equation of the answer paper evaluation. Equation. See the arrow. Very, very important. I just put an arrow. Arrow is there going from left hand side to right hand side. This is not an equal to sign. If you put equal to sign, what will happen? If you put equal to sign, somebody may cancel paper from both the sides and will say that examiner is marks. That is bad. Let me ask you one question. All of you have answered 12th standard examination. Done. 12th standard examination. This is the equation I'm giving. So in the equation, I want to know what is known, what is unknown, what is real, what is imaginary. All of you have answered 12th standard examination. Do you have your answer papers with you? Do you have your answer papers with you? No. No. Do you know where the answer papers are? No. No. See, very important. Nothing has happened to your answer papers, but your answer papers are now imaginary. Imaginary. You don't know where they are. Do you know which examiner has evaluated your answer paper? No, sir. No. Okay. But do you have the mark sheet? Yes, sir. Oh, that's very, very important. So mark sheet is real. Examiner is imaginary. Answer papers are imaginary. But a mark sheet is real. In the data analysis, nobody want to know what was the data. Nobody want to know who evaluated. But everybody wants answers, data, answers, summary of that. For example, I'll tell you. Let us say that
we collect a data for prediction of a rain. Prediction of a rain. Now, for prediction of a rain, we collect data from large number of centers. They all give the data to some kind of computer center. They will evaluate and tell, tomorrow 4 o'clock there will be rain. What is important for you? Whether there will be rain or not. That's the only important thing. Other time, data you don't want to see. The computer center also you don't want to visit. So we only want to know the important thing, the result. So in this case, marks is the result. Analysis is important. Data analysis is important. Output is more important. So in this case, marks are real. Very, very important things. Now, paper is not changed after evaluation, but they are imaginary now. Examiner is also imaginary now. Marks are real. And this marks are obtained without disturbing the system. One more thing I just wanted to know. Now, normally the examiner is a person. Examiner is a person, teacher, expert for that subject. He's paid some money for evaluating a paper. How much money Amravati University gives you for evaluating in one paper? How much money Amravati University gives you for evaluation of one paper? 12 rupees, sir. 12 rupees. Yeah. I used to come to Amravati University and correct the papers. And I used to get some money. And you have to correct 20 papers in a day or something like that. Okay. And when teacher is correcting, teacher may be biased. Nowadays, you know, machines are correcting papers. Machines. NET exam. Who is correcting NET exam papers? Machines. JEE exam. Who is correcting? Machines. Machine. Yes. NEET exam. Medical exam. NEET exam. Machines. How? Machines are correcting papers nowadays. But somebody says, oh, machines are correcting because they're MCQs. Please note, even other papers are also corrected by machines. If you write a research paper, which is not MCQ, they will send it to the machine. A machine will find out, or software will find out how much is the piracy in that. And they may reject the paper. Nowadays, even subjective answers are corrected by machines. Do you agree with me? Yes, sir. Yes. And when machine corrects, it corrects very, very fast. Okay. So normally, what will happen? One examiner will not correct one paper. He will correct many, many papers. Paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. Paper 1 will have marks 1. Paper 2 will have marks 2. Paper 3 will have marks 3 and things like that. List of papers, many papers. You will correct many, many papers. All those papers will not be changed, but you will get a marks. One more question I want to ask you now. Can it happen? Please note. Can it happen that two totally different papers, can it happen that two totally different papers get same marks? No. Two totally, let's say paper 1 and paper 4, totally different. Can they get same marks? No, sir. No, sir. Why? They are different. But marks can't marks be same? If the answers are different, how we can evaluate same No, let's say I answered question number 1 and you have not answered question number 1. But yes, can our marks be same? Yes, sir. Then, okay. So very, very important. Can there be two different students? Can there be in a class? Can there be two different students having same height? Yes. Yes. Then can there be two different? One may be girl, one may be boy, but the height is same. There can be many answer papers having same marks.
different answer papers. They are not copied, no copy. But the marks are same. It can happen. Okay. So therefore, marks are same. That means the students have copied. It's a bad analysis. Okay. Analysis has to be taken with a pinch of salt. There you need expertise. There you need expertise. Very, very important. Okay. Mark list is obtained without disturbing the system. So this example I just gave you for teachers. Analysis of an answer paper can be done by a man, expert, can be done by a machine. But it's a green analysis. It's a green analysis. Now, is this equation? Is this analysis equation? Yes. What is known? What is unknown? We are actually solving for marks. Marks are normally unknown. Okay. Now I'll go to different things. Similar topic, but different things. Different example. On my slide, you see number of vehicles. Some are small vehicles, some are large vehicles. All these vehicles will run on petrol or diesel. The most important thing, you'll see that they are having wheels. Those wheels are using tire tubes. And in the tubes of the tires, there will be air or gas. All these vehicles, they run on an engine. They use a fuel. They have the wheels. The wheels have tires and tubes. And in the tires and tubes, there is an air or a gas. Imagine that the tire is punctured. No air in the tire. Will the vehicle run? No. Yeah, so that's very. So it's again very important part of the vehicle. That air is an important part of the vehicle. Important part. Fuel is an important part of the vehicle. Every part is important. Now I'll be talking for a research analysis for a research. When I do research, I focus. When I do a research, I focus. Now I'm focusing on only the gas which is there in tires and tubes. Other part is not important for me. Some other person will do research on that. So for me, I focus only on the air which is there in the tubes and tires using my data analysis concept. This study, whatever I'm presenting to you, was done in 1888. The study which I'm presenting to you was done in 1888, around 150 years back. There was no technology. There was no AI. There was no digital technology. Please note, and many people did this study. I'm just presenting to you in a different way that you understand. I am focusing on this. There is air in the tubes. And on that air, I focus. Now, what you see on my slide, can you tell me what you see on my slide? What is seen on my slide? Tire and air pressure. So I can see, let me put it that way. I see one tire. Then I see one hand, one person. And I see one machine. That machine may be used to find out pressure of the air. Okay.
My problem is to obtain pressure of a gas in car tire. My problem is to obtain pressure of a gas in car tire. I took this example because every one of you are using a vehicle. Some of you might be using vehicle even during this lecture. And there is a tire and there is the air and like that, and you must be finding out pressure. Okay, so my problem is to obtain the pressure of a gas in car tire. Let me give an example now, another example. Can I find my own pressure? Can I find my own pressure, my pressure? When I say pressure, blood pressure. Can I find my blood pressure? Can we find our own blood pressure? Are you getting my question? Can we find our own blood pressure? Yes, sir. Yes. But So, it what requires do we need? another machine. Yeah. So we need a machine. Uh, We need a person. We need a person. That person may be doctor. Okay. So it's a similar thing. Now I need to find my pressure just to check whether I'm okay or not. Whenever I go to doctor, whenever I go to hospital, first thing they will check my pressure. And then they will do my analysis. So this is similar thing. So I take my vehicle to the garage. The garage will have one person. He will have one machine and he will check my pressure of the air in the car tire. Once I find my blood pressure with the help of doctor, is there any change in me? Is there any change in my blood? Once I find my blood pressure using a doctor, maybe with the help of doctor, is there any change in my blood? No. Yeah, so there is no change in the blood. So similarly here, if you find the air pressure, there is no change in the air which is there in the car tire. So this analysis is a green analysis. Very, very important. This analysis is a green analysis. Let me give you another example of red analysis. When I give my blood to the blood pathological lab, and they analyze my blood, do I get my blood back? So you'll see that my blood gets destroyed in the analysis. That's a red analysis. This is the green analysis. So I find the pressure. So system is not changed after the analysis. Pressure is obtained without disturbing the system. Very, very important. System is not changed after the analysis. Pressure is obtained without disturbing the system. It's a green analysis. Let me put it different way now. Same thing in a different way. So there is a system, maybe my gas in the car tire system. There is an expert who finds the pressure, He gives me a value, pressure value, some number, and nothing happens to my system. So to obtain the pressure of a gas in a car tire is similar to correcting the answer paper. Am I correct? To obtain pressure of a gas in car tire is similar to correct the answer paper. It's a green analysis. It is like finding my own pressure. Nothing happens to me. So this P is a value of the pressure. This P is a person with the instrument, And he is working on my
system. And my system is same, nothing happens, but I get a value. Oh, this is a technician, this is a person. P is a bold here, bold person. And I get something like this. So he will not correct only one tire. He will not check only one tire. He will check many tires. Tire 1, pressure 1. Tire 2, pressure 2. Tire 3, pressure 3. Like that. He will get lot of data. Each tire a pressure. Then next. Data is obtained without disturbing the system. Next thing. Now, I can find my pressure. No problem. Can I find my volume? Anyone? Can I find my volume? Volume occupied by me? Volume is not a sound volume. Huh? Can I find volume occupied by me? Anyone? How do I find? Can I find volume occupied by me, and how do I find? Can I find volume occupied by me, and how do I find? Let me check the Yes, chat. sir. Archimedes principle using. Oh, so that means you want to put me in the water, and I may not be comfortable with the water. Okay. Finding pressure was easy. Finding pressure is difficult. Sorry, finding pressure was easy. Finding volume was difficult, as you can guess. Now, then something, oh, let me find a volume now. Let me find a volume of a gas, volume of the air in this tire, total volume. For that, I need to go to expert. This is the expert who can find the volume. He operates on this, gives me the value of volume, and my system doesn't change. The volume is obtained without disturbing the system. Now, I can find a temperature of the gas. Now, as you can guess, I can find my own temperature. For that, I need a thermometer. And nothing happens to me. I get a temperature. Can we find our own temperature without using thermometer? Anyone? Can we find our own temperature without using thermometer? Can we do that? Can we find our own temperature without using thermometer? Are you getting my question? Can we find our own temperature, body temperature, without using thermometer? We can find, but not the exact value. Why? In Corona, we used to find temperature without touching the person. Okay. During That is only COVID, we used to find temperature of the person without touching the person. for that we have to again use the thermometer. No, there was a gun, no? There was a gun, red gun, Yeah. IR Yes, sir. gun, no? Yeah. So there are various ways. There are various ways to find things, and there are technologies to collect the data. But our idea is we do not want to disturb the system and collect the data, get the data, and make a use of it. One more thing I'll ask. Can I find my weight? Can I find my weight? Weight. I just want to convey important information. Can we find our own weight? Can we find our own weight? वजन आपलं वजन करू शकतो आपण? Yes, sir. Okay. What are the requirements? What do you need? Weighing balance. Yeah, weighing balance. Okay. So let's say there is a weighing balance. एक सोनारच्या दुकानात गेलो, तिथं weighing balance आहे. Can I stand on that?
No, sir. Then there is a problem. So what do you need? Larger one with a larger capacity. Okay, so let me give a larger balance. When I go on the highway, there is a written 100-ton balance. 100-ton balance. So trucks are weighed there, trucks. So I'll just go there and take my weight, and my weight will be 0. Then I'll say that I'm a 0 figure. Is it correct? Sir, that is correct. But if you want to measure or weight, there should be a proper weighing balance with proper capacity. Very good. So it need to have specific thing. What you done based on that. Otherwise, your experiment can be horribly wrong. Okay, not that every experiment is correct. So you need to be very, very careful when you make measurement. So I will get a temperature of a gas with this temperature of the gas. Now, okay, I can find the weight of me and I can use the balance. No problem. I agree. Can I find weight of my eye? Can I find weight of my eye? Are you getting my question? I can find my weight, my own weight, no problem. I can find. Let's say that it is 72 kg. I found my weight. Can I find weight of my eye now? What I need? Anyone? Can I find weight of my eye? I want to analyze my eye. I want to know what is the weight of my eye. How do I get it? Is there anyone listening? Let me check. Is there anyone listening or Yes, just sir. logged in? Yes, sir. But to How do I have find weight of my eye? Umesh Gunskar says yes. How do I find? If yes, then how? How to find it? How do I find weight of my eye without disturbing me? Just think over it. Think over it. How can I find weight of the tire that I can take? I can take the weight. I can take the tire out of the car, take the weight, and again fix to the car. No problem. That can be done. But can I find out weight of my eye? Oh, then it needs a different model. Then I cannot find out exactly. I will have to make different experiment. I might have to do approximately. Not that every problem can be solved exactly. I might get approximate weight. There may be methods and there may be acceptable methods. Very, very important. Okay. Then what I do is next. I hope you are getting me. Okay. So I can find out temperature of the gas. That is possible. Then I can find out amount. What is the amount of the gas in the tire? For example, when you get cylinder at home, I know in the cylinder there are 14 kg of gas. Amount is 14 kg. Then after use of 10 days, it will become 10 kg like that. I know that. So I want to find out how much gas is there in the tire. For that, there is an expert called Yan, capital Yan. So he gives me the amount small Yan value and I get this. Now what I do? I took so many tires. Some tires are small, some are very large. Independent of any tire, I just found out for a given tire, I found out pressure of the gas. I found out volume of the gas. I find out temperature of the gas. And I found out amount of the gas.
Then I took many tires, and then I made tire 1, pressure, volume, temperature, amount. Tire 2, pressure, volume, temperature, amount. Tire 3, pressure, volume, temperature, amount. And I make this table for large number of tires at various places. I think Chandrakant Khade, your mic is need to be mute. Okay. Somebody's mic is on and unnecessary noise is coming. Yeah, so please put it off. If possible, please put it off. तुमचा mic कृपया बंद करा. Can you hear me, Chandrasekhar Khade? Chandrasekhar Khade, can you hear me? चंद्रशेखर खाडे, तुम्हाला माझा आवाज येतोय का ऐकू? तुमचा माईक बहुतेक ऑन आहे, तुम्ही ऑफ करा. म्यूट करा, म्यूट. ऑफिसचं कोणी आहे की त्या ऑफिसचं? Anybody from office here? Anybody there from office? Yes, sir. Yeah. Can you please put mute of Chandrasekhar Khade? Yeah, sir. Definitely, sir. You can also Yeah. mute, sir. Oh, Yeah, I can have also complete mute. access, sir. I can also mute him. Yeah, sir. Yeah. Oh, sorry, I was not knowing. Okay, I was not knowing. It is not good to mute anyone, but it's okay, no problem. So Yes, what sir. I'll Please do, continue, sir. for every tire, I will find these 4 parameters: pressure, volume, temperature, and the amount. And I make a table. 1 column for pressure, 1 column for volume, 1 column for temperature, 1 column for amount. Then I take this, I derive 2 new columns. I multiply this column P and column V and make column PV. Multiply this column T and column N and make column NT. Large number of tires. Now these parameters are obtained without disturbing the system. That is very important. And then I just take this PV for every tire and divide it by NT for every tire. And that value, I call this as R. Because it's a ratio, I call it as R. Then I find this R for tire 1, tire 2, tire 3, tire 4, various types of tires, large number of tires. And I find this R is a constant. This study was done in 1888. They found that irrespective of the tire, this value is constant. And then they made an equation. PV is equal to nRT. This was the equation they proposed, that these parameters will be always related by PV is equal to nRT, and that R is called as a gas constant, called as a universal gas constant. This P was found, pressure was found by one scientist, volume was found by one more scientist, amount was found by one more scientist, temperature was found one more scientist. No, very, very important. 4 different scientists. And one more scientist, when added all this data, did this analysis, he came with this equation. So what we studied in this, parameters are obtained without disturbing the system. And these parameters are related by the equation. So with all this small story, what I told, that data analysis, we need to do a green analysis. And people 150 years before, they have shown to the world, oh, such a thing is there. When you can make data analysis, you can come to some equation. Once you have equation, you can take a patent. You can do a research. You can take a patent. 4 different scientists can do 4 different findings. One scientist can collect all the data, make one more finding, and then it can be very, very useful for human beings. Okay, that is what is important. Okay, so let me talk a little bit about synthesis. Synthesis is of 2 different types, 3 different types I'll just tell. Basically 2 different types, third I just made a simple. One is called natural synthesis, natural.
So in the natural synthesis, very good example is a blood, synthesis of a blood, natural synthesis. Blood we cannot synthesize. It is a God gift to us, God gift. Other is called as artificial synthesis or the synthesis in the laboratory. Very good example is synthesis of urea. Urea is a fertilizer. Earlier, people thought that urea can be synthesized only naturally and it can be extracted from urine of animals. But then it was found, thanks to some scientists, then it was found that urea can be synthesized without help of any animal. And now because it is synthesized using machines, it can be synthesized in tons and thousands of tons, metric tons. And because of that, you can see that agricultural products are getting more and more. There is a evaluation on that. Blood cannot be synthesized. Nobody can synthesize blood using machine or in the lab. But blood is required in the hospital. Then we get the blood from blood bank. We need to donate the blood. It is my appeal to all the teachers, please donate blood. You can donate a blood on your birthday. You can donate a blood on your anniversary day. You can donate a blood on mother's birthday and things like that. Please see that you donate a blood. Because one cannot synthesize in the laboratory blood. Another synthesis I'll be talking, very, very popular, which we do, synthesis at home. That's a concept. Just for concept, I'll just tell you this. Synthesis of something at home. What you see on my slide, there are three pictures. All three pictures are making a tea. You can see that picture 1, picture 2, picture 3, they're all making a tea. And in my title, you say teaching synthesis. In the word called teaching, there is a TEA. So teaching is very, very close to a T. Teaching synthesis. Now, when you see this slide, you can see that there are 5 pictures here, 6 pictures here. Chai, GPT, chai. See the words used. Chai wali, like that. Graduate chai wali. A person with a PhD, PhD tea house. There is a Evole Amrutatulya. In Maharashtra, everywhere there will be Amrutatulya. So tea is like Amrut. Can you tell me who is this person? Who is the last picture? Last picture. Is anyone here? Modi. Who is the last picture? What is this last picture here? He is an ordinary tea wala. Which one? Ordinary tea wala. With No, having no, no he's- brand name. Just see it carefully. It is just a chai wala having no brand name. No, he's a Narendra Modi. Can you see now? Narendra Modi, no? We say our Prime Minister. Our Prime Minister is actually a chai wala Prime Minister, no? Yes? Can you see now? Maybe if you are watching mobile, it may be small, very, very small. If you are watching laptop, then it will be a little bigger. Oh, so what I want to just say, tea is very, very important in our country. Even our Prime Minister is actually, we say, is a chai wala Prime Minister. Next, I'll just go. Okay, I'll skip this. There are many, many things about chai, but let me not talk to that. Okay, so I'll talk about teaching synthesis. So what we need for making a tea is a water, tea powder, sugar, and a milk. We just represent them by W.
capital T, capital S, and capital M. So these are the four things: capital W, capital T, capital S, and capital M are required to make a tea, synthesize a tea. Very, very important. Then what is observed is this: the taste of the tea depends on the amount of each of this. The taste of the tea will depend on how much water was there, how much tea powder was there, how much sugar was there, how much milk was there. That's a general observation. Who is this one? Solanki. I think your video is too many changes. Jay Prakash. It is better you put off. Sorry, sir. Sorry, sir. Because the camera is going here and there. Jay Prakash Solanki. Yeah, unnecessary. No, unnecessary disturbance it is for others. Okay, so the taste of the tea depends on the amount of these four parameters. So this is water is capital W, tea powder is capital T, sugar is capital S, and milk is capital M. And the taste of the tea depends on amount of each. Let's say small w is the amount of water. Again you are putting on. Again you are putting on. Then you see something else which we don't want to see. Please put it off. If there is a lot of moment, please put off the Jay Prakash Solanki, because we don't want to see something unnecessary. Okay. There is a problem in online lectures. So small w is the amount of water, small t is the amount of tea powder, and small s is the amount of sugar, and small m is the amount of milk. That's what we represent. So let me make a tea. Let me take a w cups of water, s t tablespoons of tea powder, s tablespoons of sugar, and m cups of milk. Let me take this. Let me add them. Then I get a tea. Very, very important. This is synthesis now. So the taste of the tea depends on small w, small t, small s, and small m. They are the amount of respective things. So mathematically we write like this. For data analysis, we write T is a function of amount of water, amount of tea powder, amount of sugar, and amount of milk. I hope you get it. Now, I make a tea. Tea preparation is like this. Depends on this. Out of these four parameters, I can make a tea using four parameters. Out of these four parameters, which parameter is zero in this? Anyone? Which parameter is zero in this tea? Milk. Yeah, so small m is zero. Small m is zero. Let me take next. Synthesis of tea. We try to learn something called optimization, data optimization. Now, this is the tea in which small t is zero. I can make small s also zero. Then I get a tea. That is for diabetic people. This tea is called the black tea. This tea is called the black tea. Then this tea will be for diabetic people without sugar. I can make M0 called black tea. If I make both zero, then black tea without sugar. Black tea without sugar. I can take water also zero. Have you made tea with water zero? Have you seen a tea with zero amount of water? Anyone? Have you seen a tea or tested the tea with a zero amount of water? W is equal to zero. It is called as rich people tea, no? Tea without water, only milk. In the milk, whatever is water amount of water is there, that is sufficient. And they don't add any water to that. Okay. So that kind of tea is also there. So there are four parameters which we can change while making a tea synthesis. I can change amount of water. I can change amount of tea powder. I can change amount of sugar, amount of milk, and I can make a tea.
there are 4 parameters which we can change for making a tea. And that is the reason if you go to 2 different houses, the taste of the tea is different. Agree with me? If you go to 2 different houses, the taste of the tea is different. Do you agree with me? If you go Yes, to sir. 2 different houses or 3 different houses or 4 Yeah. different houses, the taste of the tea in each house is different. Yes, sir. Yes. Even hotels. Go to different hotels, the taste of the tea will be different. Go to different chai gadas like that, the taste of the tea will be different. Because there are 4 parameters which you can make tea. But if you see the cold drink, Coke or Thumbs Up, the taste will be same in every hotel. Taste will be same in every house. So you'll see that because the taste is same, people may not enjoy it. People will like to take a tea because the taste of the tea is different in different house. Then you may think that, oh, in this house, I may get a better tea. Some people in Maharashtra, I'll tell you, if they may travel 5 kilometers for the taste of the tea. Nearby stall gives also tea, they will not take there. They will travel some distance because the taste in that tea stall is better. Because there are 4 parameters and you can make combinations, the taste of the tea can change in a different places. That is called as optimization. And we try to change this. We try to change this small w, small t, small s, small m, change them to get the taste of the tea better tea. That is called optimization. That will need a skill development comes. Now let's do this. In one house, a grandmother makes a tea, a mother makes a tea, wife makes a tea, and daughter makes a tea. Whose taste of the tea will be better? In a house, a grandmother makes a tea, a mother makes a tea, wife makes a tea, and daughter makes a tea. Whose tea will taste better and why? Grandmother due to experience, yes. Umesh Gunskar, no? Yeah. So, as expected, it is a grandmother whose tea will be tasting better because she has developed a skill because of experience. With the experience, she has tested the tea again and again, changed the parameters, got the feedback from the people, based on the feedback, again change it, and now she has reached to a situation where her tea is best. So that's called optimization. Change the parameter so the taste of the tea is the best. Okay, so one can learn this also optimization to this teaching. Very important. Synthesis of tea teaches many things. Let me do this now. Another. Teaching synthesis and analysis. Let's say analysis and synthesis. I'm comparing this. You are given a sugar, you are given a water, you are given a tea powder, you are given a milk, you make a tea. See the arrow, you make a tea. This is the arrow. So these things are given, add, make an arrow. See the arrow going towards tea. Now you are given a tea. You are given a tea. Now go to this arrow. Find out. You are given a cup of tea. Find out how much water is there, how much tea powder was added, how much sugar was added, how much milk was added. So going up is analysis. Going down is synthesis. Can you tell me which is easy? Synthesis easy or analysis is easy? Analysis. Analysis is easy. Just check. I'll give you a cup of tea and you find out percentage of water, percentage of tea powder, percentage of sugar, and percentage of milk. Is it easy?
or making tea is easy? Yeah, Anu Padwal, Nagesh Kale, synthesis is easy. So they are thinking this is, see, you'll see that synthesis is always easy. Analysis is difficult. Analysis needs equipments. Analysis needs expertise. Synthesis is the easier one. One can approach. If it is not good, you can throw it, no problem. You can make a new one. Trial and error, you can make a synthesis, trial and error. Large numbers. Okay, now, which is first? Which we want? What we want? We want synthesis or we want analysis? What is the objective? What is the objective? Synthesis objective or analysis objective? Synthesis is difficult. Analysis is, synthesis is easy. Analysis difficult. Which one we want? Our goal is to synthesize. Please note. Our goal is to synthesize. Our goal is to make new things. Our goal is to make a blood. For example, I would like to synthesize the blood. So synthesis is a goal. I will like to synthesize a blood. But before synthesis, I must analyze the blood to find out what are its components. What does it contain? So I must do analysis before synthesis. And after doing synthesis, to check whether what I made is correct or wrong, I have to again do analysis. So analysis is there before synthesis. Analysis is there after synthesis. Therefore, analysis, even though difficult, is very important. Analysis, even though difficult, very important. It is there before as well as after. Please note, I don't know whether I have this on this slide. Okay, teaching synthesis and graphs I'll not do, but what I'll tell you is this. If you go for TEA, I don't know whether I have somewhere. I just want to tell you that. Somewhere I have written, I don't know. Okay, see this. Teaching, TEA. If you say TEA, stands for Teaching Excellence and Achievements. The T example I have taken because it is very close to teachers. It stands for Teaching Excellence and Achievements. So one can give this example many places. Making a tea tells you what is synthesis. Making a tea tells you what is analysis. It also helps you something called optimization techniques. And it also tells you that analysis is difficult. Synthesis is easy. But analysis is very important. So what I'll do, I'll just go to the last slide and just to thank you before I start anything. And I'll give this 2 minutes. If you have some discussion, I do to you. I will skip other things. Okay. If there is anything you want to discuss with me, you can do it here. I'll be happy. Or you can note down my email address. You can note down my phone number. You can contact with me. I'll be helpful to you. Even if you want to do any course at Goa University, MMTTC, please contact me. And I will see that your name is added in our course. Okay. I thank you if there are no questions. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Participants, is there any questions? Is there any questions? If having some questions, you can ask to Professor Sirsat, sir. Either we can conclude. Yeah.
participants, most of them interacted during the session. Yes. I know, sir. I was in the session, sir. Yeah. So they interacted, and they can always use my email and phone and contact me. I am from Maharashtra, basically from Nasik. So I'll be very close to you. Any help you required, I'm there with you. Thank you, sir. I think we should conclude if you could permit, sir. Okay. So on behalf of Malvi Mission Teacher Training Centers and Galge Baba Amravati University, Professor Gawande College, Sakharkheda, and all our learned participants who have taken the active participation in the interaction and during the session, and all other participants, those who have joined, I extend my sincere thanks to Professor Sesat, sir, for such a wonderful and interactive session towards this skill development. Sir, we are really thankful to you because your the inputs that you have provided during this session was really nice and useful for our futuristic perspective, for our research purpose and our curriculum purpose. With this, I once again extend my sincere thanks for your precious time and thought-provoking session here. And with the kind consent of Professor Sesat, sir, I would like to declare that this session will be over here. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Participant, please be stay connected. We will start with our next session within 1 or 2 minutes. Hello, Professor Sharma, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Shall we start, sir, if you could permit? Yes, sir. Yes, sir. So, friends, good afternoon once again. As I have already told you that the today's session have been split into the two different parts. That is the two different verticals. First vertical of this policy or flagship program we have at most completed, and now we are moving towards the another part of today's session. That is the IKS, Indian Knowledge System. Yesterday, a couple of things we have already discussed with this vertical, and today we will going to elaborate this concept with the help of one of our scholarly and the eminent expert, Professor Dr. Rajkumar Sharma, sir. Sir, first of all, I extend my warm welcome to you to this flagship program and particular to this session. Friends, Professor Rajkumar Sharma, sir, is the associate professor at this UGC Malviya Mission Teacher Training Center at Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, situated in the Gwalior, Madhya Pradesh. He has more than the 2.5 decades of experience in this field of higher education, being the faculty of this Malviya Mission Teacher Training Center.
executed the numerous faculty development, orientation, short-term programs. Through that, he has trained thousands of faculty across the country. He specifically belongs to the subject from the physical education. He has completed his BPEd and MPEd and PhD with the merit scholarship in the graduation and the gold medal in the post-graduation. His area of interest is the sport biomechanics, methods in the physical education. He has a special achievement on his credit that runner-up in the West Zone basketball males and the inter-university and the represented All India inter-university basketball tournament. He has extensive research publication work, and he has published more than 70 research articles in the different national as well as the reputed international journals. He is the co-author of 5 different books. He has acted as a chairperson for the various national seminars, also the observer for the South Zone basketball male tournament, and delivered more than hundreds of lectures at the different MMTTCs, universities, and institutions of eminence. Under his able guidance, 2 scholars have been completed their PhD degree and still 3 are pursuing their research. So friends, this is a brief introduction with regards to Dr. Sharma sir. In the today's session, he will exchange his thought on these very much important aspects or the vertical of that is the integration of IKS, that is the Indian knowledge system in our curricula. So with this, I once again extend my sincere warm welcome to Professor Sharma sir and request you to sir, please start with your session. So please. Thank you very much, sir, for giving the introduction. Before I proceed further to my session, I would like to extend my heartfelt thanks to Professor Atiq Mohammed sir, the director of MMTTC, for providing me this opportunity to interact with the people who have joined their online platform. So once again, thanking to him and thanks to you, sir, for giving my introduction to all the participants of your Sir, online sorry to interrupt you. Before starting the session, it would be very convenient, sir, if we will go in the bilingual, sir. Okay. Thank you very much, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks for this information. तो एक बार पुनः मैं आज जो है चर्चा करना जा रहा हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक मुझे दिया गया है MMTTC की तरफ से, एंड द टॉपिक इज IKS, विच मीन्स भारतीय ज्ञान परंपरा। यानी कि हमको जो बात करनी है आज, वो हमारे एंशिएंट नॉलेज के बारे में बात करनी है। हमारा जो भारतीय पुरातन ज्ञान है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू share my PPT, so just allow me to share that. Just I would like to know whether my PPT is shared or not. Yes, sir, it is visible. Okay, fine. Thank you. Thank you, sir, for your response. So as being told that I have to discuss and give my points and views on the Indian knowledge system, that is Bharatiya Gyan Parampara. Moving ahead with this, wait. All right. As we were discussing about or started the discussion on the Indian knowledge system, actually it was all started in the present ministry or the present education, that somewhere we have lost our ancient knowledge, just because of the education system which we have adopted since several decades or several centuries, we can say. जो भी बदलाव पिछले 1-2 शताब्दी वर्ष पूर्व हुए थे, उन बदलावों के पश्चात हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सारा उसमें बदलाव होने की वजह से वी हैव लॉस्ट समवेयर द ओरिजिनलिटी ऑफ दिस कंट्री, द ओरिजिनलिटी ऑफ द नॉलेज व्हिच द इंडियन पीपल हैव इन देयर एंशिएंट टाइम. So with respect to that, in regard to that, it is decided to
decided to have the knowledge of this to all the people, all the citizens, or all the students who are coming to get the education at either at the school level or at the college level. So it has been decided to have interaction on that, and it is also decided that some sort of the literature should be provided to all the students who are teaching there in the teaching and learning in their college level or university level, whatever it is, so that we can give some sort of idea of the ancient knowledge which our ancient people had, which they have developed at that era, at that point of time. और इसी के साथ जो है उन्होंने ये सारी प्रयास जो है आरंभ कर दिए कि हम जो है भारतीय ज्ञान परंपरा की बातचीत जो है सभी तक पहुंचाएंगे। और उसी प्रयास में एनईपी 2020 में काफी बदलाव किए गए, एज वी ऑल नो, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस फ्यू थीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड into the curriculum or into the training part or the education part। ये सब चीजें जो है ये डिसाइड की गई, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपने अभी तक अटेंड कर लिए होंगे और भी अटेंड करेंगे आगे चल के। उसी में से एक भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसके माध्यम से हम सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि किस प्रकार हम जो है अपने पुरातन उसको ज्ञान को भूल चुके हैं। और ऐसा कहा भी गया है कि यदि हम अपनी मूल परंपराओं को और मूल संस्कृति को यदि हम भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम अपनी जड़ों से हिल जाएंगे। तो टू रिमेन इंटैक्ट विद द ओरिजिनल रूट्स ऑफ द इंडियन कस्टम, इंडियन कल्चर, it is required to provide this type of education, this type of knowledge through the education system to all the students, and that will only be possible by the teachers, because they are only the persons or the intellectuals who are interacting with the students in different levels, at a school level, at a college or university level, whatever it is. So therefore this kind of the courses or theme based programs have been announced by the government of India, and with the help of that they are trying to provide the knowledge of Indian ancient time to all the teachers, so that it can be transferred to different parts of the country. So as we are talking about the Indian knowledge system, it actually refers to the vast, diverse, and ancient body of indigenous knowledge and the philosophy and the practices which the Indian subcontinent have from over the thousands of years ago. It is the structured framework and integrates the material science with the spiritual wisdom to offer a holistic and understanding of the world. Now, as we can see, the people are moving towards this continent, or especially in India, for some getting some knowledge and getting some relaxation and doing some meditation and trying to find out what for they are here and what is the real task they are supposed to do, from where we came and from to which side we all will go। यानी कि हम किस वजह से आए हैं, क्या हमारा मूल कर्तव्य है, क्या कार्य है, और उसके पश्चात जो आगे भविष्य में या उसके पश्चात जीवन के अंत के बाद कहाँ जाएंगे। तो इन कुछ धारणाओं को समझने और जानने के लिए भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आते रहते हैं, और ये केवल भारत के अंदर से नहीं बल्कि विदेशों से भी आते रहते हैं। ऐसे उदाहरण हमको बहुत सारे मिले हैं। उसी में से एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। the multimillionaires who used to visit to India to have some sort of this mental satisfaction or mental balance to in their life, like the Mark Zuckerberg and other people। बहुत बड़े बड़े लोग, ख्याति प्राप्त लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे विभिन्न आश्रमों में वो जाते हैं और वहां पर जो है इस तरीके की शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जहां पे उनको मानसिक अवसाद से कुछ फायदा मिल सके। अर्थात उनको जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटली थोड़ा सा उनको सिकनेस है, उससे निजात पाने के लिए, उससे बचने के लिए वो यहाँ पर जो है प्रवास के लिए आते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल विजडम है इंडिया का, उसके ऊपर जो है फोकस अब बढ़ता जा रहा है लोगों का नाउ, whereas the Indian people are not having any attention towards these kind of the good things which we have from our ancient period of time। तो उसी के ऊपर फोकस करते हुए ये सारी बातें जो है की जा रही हैं, और हम जानते हैं कि अपनी जड़ों से लगातार यदि हमको जुड़े रहेंगे तो हम जो है बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, और बहुत अच्छे से जो हमारा
पुराना जो नॉलेज है उसको भी सरवाइव कर सकते हैं और आगे उसको और जो है बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं जो आज विश्व में है उनसे हमको छुटकारा मिल सकता है, स्पेशली जो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल सिकनेस और इस सब की बातें हैं। यहां पर मैं एक उदाहरण और आपको देना चाहूंगा मित्रों कि WHO ने फिजिकल फिटनेस की जो डेफिनेशन दी थी उसमें ये कहा था शुरू में कि अ पर्सन हु इज एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज without any problem is a fit person. This is the definition of fitness being given by WHO in 1948. But later on, if you search for this particular definition, you will see that two words have been added to this. अब वो दो शब्द कौन से हैं? वो दो शब्द हैं, एक वेलनेस और एक जो है माइंडफुलनेस। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं और अपने दैनिक कार्यों को सुचारू पूर्वक कर पा रहे हैं, तो आप जो है फिट हैं ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है कुछ और चीजें हैं जो कि हमको परेशान कर सकती हैं, जो कि हमको अपने जीवन जीने के जो तरीके हैं उसमें जो है बदलाव कर सकती है, या हम उनसे उन समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। तो वो समस्याएं कौन सी है? वो है कि आपका वेलनेस किस तरीके से है, आपका माइंडफुलनेस किस तरीके, यानी कि आप मानसिक रूप से जो है कितने स्वस्थ हैं, मानसिक अवसाद कोई आपके अंदर तो नहीं है। यू इफ यू आर नॉट हैविंग एनी मेंटल प्रॉब्लम देन यू आर अ फिट पर्सन। इफ यू आर enjoying the wellness of your living, then only you will be the fit person. So these two words have been added by the WHO now after 1980, that a person who is enjoying the wellness and having the mindfulness, with not having any disease in their body and able to perform their regular or routine work in a in a good manner, then he will be known as the fit person from all the corners of the life. That is physically fit, mentally fit, spiritually fit, and other things, then only a person known to be a fit person. So इसीलिए तो वो जो स्पिरिचुअलिटी की जब बात होती है, अध्यात्म की जब बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो विश्व में आपको कहीं जाने को और समझने को नहीं मिलेगा। उसका जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है, वो भारतवर्ष में जो है सबसे अधिक है, इसीलिए विदेशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन नॉलेज सिस्टम, बेसिकली व्हाई दे आर टर्निंग टुवर्ड्स India is the basic reason behind that. Now, I would like to give some more information and this news or knowledge about what the Ministry of Education is doing and how they are performing their duties, and what mission and vision and objectives they have with respect to the IKS, that is Indian Knowledge System, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, उसके ऊपर कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, उसका मिशन क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उन सब की चर्चा मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार इन भारतीय ज्ञान परंपरा को जो है बड़े जोर शोर से लिया गया है NEP 2020 के माध्यम से, और उसी तरीके से ये लोगों तक जो है सूचनाएं और जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो है लाभ पहुंचाया जा सके और उनको इससे जोड़ा जा सके। सो द विजन ऑफ IKS डिवीजन इज टू रेजोनेट एंड मेन स्ट्रीम इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड, जो कि आज की समस्याएं सबसे ज्यादा हैं। Means physical things are with us. We have lots of development done. Means we have machines, vehicles, and so many things with us. But somewhere we are lacking in the mental satisfaction, mindfulness, or the mental balance. तो उसकी वजह से ये सारी चीजें जो है, कहाँ पर जो है भारतीय ज्ञान परंपरा उसको जो है उसके ज्ञान से हम इसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं, उसको ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा प्रयास जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन के द्वारा है। द ऑब्जेक्टिव of IKS division is to completely decolonize Indian mind and generating interest and healthy critical reverence for the unbroken knowledge of tradition of Bharat for the welfare of the world. So we are somewhere being followed since decades or the centuries, the Western education system. Because of that, everything has been disturbed and destroyed.
especially the ancient knowledge system, talking about the Indian knowledge system and living with the Indian knowledge system. So that was all destroyed, and that has to be regenerate once again, and it is being the main objective of the IKS division. And with this, the other objective which the IKS division have is this, that if we can find out something good out of that Indian knowledge system, and that is beneficial for the people, for the mankind, for the world, then we have to search for that. We have to do required to perform certain research into that, so that the benefit can be given to each and everyone with respect to the living in a peaceful and healthy status. Now, the next. Bharati Gyan Parampara Vibhag and Indian Knowledge System, IKS division, that is the Ministry of Education, is located in the AICTE headquarters, and it was established in the year 2020, October 2020. The motto of this division is, we can understand with one shlok, which is taken from the Rig Veda, which means, which is like this: Bhadrayam Sumato Yatim. It is taken from the Ritvik. Its number is 6/1/10. So what is the meaning of this? Is इसका जो अर्थ है कि हम जो है, let us strive for the wisdom and that leads to the welfare of all. यानी कि हम उस ज्ञान की तरफ जो है अपने आप को लेके चलें और उसकी तरफ जो है अपना ध्यान खींचें, जिससे कि हम सभी विश्व के सभी लोगों का जो है कुछ उद्धार कर सकें, उनको कुछ वेलफेयर कर सकें। तो इस धारणा के साथ कि ये सब बातें हमारे जो ग्रंथों में हैं ऑलरेडी लिखी हुई है. We have this in our ancient holy books being written over there, and one shlok is being taken from there, that is Bhadrayam Sumato Yatim. ये केवल किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता, केवल किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, केवल जो है किसी क्षेत्र की बात नहीं करता, बल्कि जब भी इसमें जो भी आपको उसमें ढूंढेंगे और उनका जब अर्थ निकालेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमेशा जो है वो मानव कल्याण की ही उसमें बातें जो है मिलेंगी, यानी कि सबकी बात उसमें कही जाती है. जिस तरीके से एक और शब्द है जो है वसुदेव कुटुंबकम, इट हैज आल्सो बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द आवर वेदास. वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी जो है वो एक परिवार की तरह है, इसका अर्थ है. तो ऐसे ऐसे जो है हमारे कुछ श्लोक हैं, ऐसा ज्ञान है जो कि इनमें लिखा हुआ है, इसमें मौजूद है, लेकिन हम जो है इसको लगातार अपने जीवन में उपयोग नहीं कर रहे हैं. उसके कारण ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं काफी वर्ष पूर्व, काफी दशक पूर्व या सेंचुरी पूर्व जो है इसमें बदलाव कर दिए गए थे. तो हमको वापस इसकी तरफ लेकर के सब लोगों को आना है. There is a vision of this division, and which is that to promote interdisciplinary research on all aspects of Indian knowledge system, preserve and disseminate Indian knowledge system for further research and societal applications. यानी कि हम इसमें जो है एक अंतर विषयी जो है शोध के ऊपर जो है कार्य किया जाए, जिससे कि इसमें छुपा हुआ जो ज्ञान है उसको हम फिर से निकाल करके प्रयास करें कि उसको निकाल करके हम जो है सभी के समक्ष लेकर के आए, जिससे कि जो आजकल की हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनसे हमको कुछ जो है छुटकारा मिल सके, उनसे हमको कुछ निजात मिल सके. वी कैन लिव not even in a family so peacefully, but in the society also, and in the nation also. So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम उनका सोसाइटी में एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो हमको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. इस सोच के साथ जो है हमको बहुत सारी शोध करने की आवश्यकता है. वी नीड टू कंडक्ट सम रिसर्च, एंड आफ्टर दैट some more clues can be taken out from the ancient knowledge, which may help in the coming years or for the coming generations, where all the which will help the society, nation, and the world. So likewise, this is the vision of the IKS. So as we can say, the ancient text and their reading is an imperative part of our society, as it is the continuing practice from long time. Puranas were recited in public gatherings and were considered as scripture of masses. यानी कि बहुतायत में लोग इसका प्रयोग करते थे. जो हमारे पुराण हैं और भी जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उन सब का जो है उपयोग लगातार हमारे समाज के द्वारा कई जनरेशन से किया जा रहा है, और लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो हमें उसकी तरफ ध्यान बढ़ाना आवश्यक है.
We will also discuss some more mission of IKS, that is to create a database of individuals and organizations who have contributed by way of research, teaching, publication, and preservation of ancient and contemporary rich Indian knowledge system ranging from different disciplines. यानी कि जो विभिन्न विषयों में छुपी हुई जो गूढ़ बातें हैं, जो सच्चाई है, उसको बाहर निकाल करके लेके आना और उसके पश्चात उसका एक डेटाबेस बनाना, और जिससे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर कार्य कर रही हैं और या फिर जिन्होंने काम किया है कुछ शोध के माध्यमों से, उसको सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो उसका एक डेटाबेस तैयार करना, दिस इज द पर्पस बिहाइंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिशन ऑफ IKS. Another mission is to promote and enable further research to address the challenge faced today in society by different areas. As we can see the Western countries are I'll not say it completely, but they are having some sort of disorders while living with their family members, while they are having family relations among each other. तो वो वहां पर की जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे जो है, बिकॉज वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम कल्चर और सेम एजुकेशन सिस्टम्स, दे आर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर being raising in this countries also. I'm giving you one example, you might be agree with me. जैसे कि we were not having the nuclear family system before a few decades before, but as soon as the people are moving outside from their homes, from the joint family, they are moving outside to have some jobs or perform some duties to earn their livelihood, then they are in the nuclear family, but still we follow the joint family system in whole country. आज भी हम जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम को फॉलो करते हैं और सभी को एक साथ लेकर के चलने की बातें करते हैं, वेयर इज इट इज नॉट देयर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. कैसे नहीं है? क्योंकि जैसे ही जो है पिछली जनरेशन जो होती है और जो यंग यूथ है, वहां पर वो बुजुर्गों को ओल्ड एज होम्स में पहुंचा देते हैं, उनके लिए वो स्थान वहां पे नियुक्त किया गया है, वो स्थान बनाया है जहां पर बुजुर्गों. बट दिस इज नॉट बीइंग फॉलोड इन दिस कंट्री एवर. यहाँ पर होम्स इन दिस also and in different cities where these homes to survive, they are surviving there by their of their own, and they are paying some money or like that. There are so many centers like this have been evolving in this country also. तो ये समस्याएं जो वेस्टर्न में थी, ये परेशानी वहां थी, ये परंपराएं वहां की हैं, ये भारतीय परंपरा नहीं है. तो कहीं ना कहीं हमको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि जो आज के समय पे जो भी समाज में विसंगतियां फैल रही हैं, उन विसंगतियों को हम किस प्रकार से दूर कर सकें. मानसिक अवसाद जो फैल रहे हैं समाज में, उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकें विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से. उन सब माध्यमों के बारे में आगे हम इस सत्र के दौरान चर्चा करेंगे. So with this example, you might be understood that what sort of problems the Western world having, and the same is evolving in this country, and we have to keep ourselves away from such problems, societal problems. Next mission is to get the reports of work done by all the people who have contributed to IKS and bring out a regular publication. यानी कि all those people who are working in this field and conducting some research, and they are taking out the knowledge from the ancient system, then that is to be kept in one place, and after that, that is a regular publication needed to be done to send or to give this information to everyone who are interested in this and through the education system. Next mission is to suggest a measure to integrate IKS in textbooks and reference books for modern disciplines of knowledge offered at school and higher education. So next mission, as we can easily understand, once we will start talking about this, और इसके ऊपर जब चर्चा आरंभ हो जाएगी, इसके ऊपर जब जो है सिलेबस बन जाएगा, इसके ऊपर करिकुलम में हमको इसको स्थान देना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए जो है वो विभिन्न किताबों का भी जो है उपाय हमको ढूंढना पड़ेगा, बुक्स भी हमको अवेलेबल करानी पड़ेगी, लिटरेचर भी अवेलेबल कराना पड़ेगा. So this is another mission of IKS to have such kind of facilities required to be developed for to enhance the knowledge of ancient time to everyone.
Next mission is to constitute expert groups and committees to plan, execute, and oversee the objectives of IKS division. So whatever work is being done on the IKS that is needed to be seen by the different groups or the committees, that committees will be made by the IKS, so that and follow up can be taken that what work is being done since in the field of IKS. अब जैसे कि चर्चा कर रहे हैं कि नीड ऑफ आईकेएस, आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स एंड सेड अर्लियर आल्सो कि हमको इसकी आवश्यकता क्या है. द बेसिक नीड ऑफ आईकेएस अरोज व्हेन एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री रिफ्लेक्टेड सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इट. वन ऑफ द एग्जांपल कैन बी द इग्नोरेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड एंशिएंट टेक्स्ट इन द करिकुलम. जैसा कि हम देख रहे हैं वेस्टर्न सिस्टम ने इतना हावी हो गया है कि हमारी जो कुछ क्षेत्रीय भाषा हैं वो भी अब जो है एकदम लुप्त होती चली जा रही हैं. इसीलिए शायद आपको भी जानकारी होगी कि एनईपी 2020 में ये प्रावधान रखा गया है कि हम जो है विभिन्न विषयों की पढ़ाई या उनका शिक्षा दीक्षा जो है वो उनके रीजनल क्षेत्रीय भाषा में जो है कराने का उनको अवसर प्रदान करें. तो इसलिए दिस अपॉर्चुनिटी इज बीइंग गिवन थ्रू द न्यू गाइडलाइन ऑफ एनईपी 2020 दैट द पीपल ऑफ द रीजनल पार्ट कैन हैव देयर टीचिंग एंड लर्निंग टिल क्लास 5 इन देयर रीजनल लैंग्वेज इटसेल्फ. यानी कि उसको हमको सरवाइव करना है. जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं उनको वापस जो है सरवाइव करना है, उनको वापस जो है लोगों के बीच में पहुंचाना है, जिससे वे उस अपनी क्षेत्रीय भाषा को, मातृभाषा को लगातार अपने साथ लेकर के चलें. और उसके पश्चात यदि वे दूसरी भाषा में ज्ञान लेना चाहते हैं, देन द डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन टू हैव दैट एजुकेशन इनटू देयर इंटरेस्टेड विद देयर इंटरेस्टेड लैंग्वेज वट एवर दे वांट. सो अब इसका एक और फायदा जो है आप समझ सकते हैं कि छात्रों के ऊपर पड़ेगा. हमारे जो बहुत छोटे जो छात्र हैं, द चाइल्डहुड स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड दे आर हैविंग मच मेंटल प्रेशर बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज वी हैव सीन एंड द रिजल्ट्स आर देयर गिवन बाय सेवरल एजेंसीज. इफ the same knowledge or education is being given in their own language or in their regional language or in their mother tongue, then they will not have that kind of mental pressure to them, and their mental capability may give some more results in comparison to the education is being given by in other language. यानी कि उनके ऊपर जो मानसिक प्रेशर है भाषा के वजह से पड़ता है, जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, तो वो उससे भी जो है उनका जो विकास है वो रुकता है. द प्रॉपर डेवलपमेंट इज नॉट देयर जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर. दैट बैरियर इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन अवे, एंड therefore दिस इज वन ऑफ द नीड ऑफ IKS. यानी कि इस उद्देश्य के साथ जो है कि भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को जो है बराबर से जो है उनको पुनरुत्थान की तरफ लेकर के चलें. Even though the Western concept added the existing quire of concepts gradually, it has started replacing the Indian concept, which lead to realization that our roots are needed to be more robust. जैसा कि हमने देखा कि पाश्चात्य सभ्यता ने जो है अभी इतनी ज्यादा तरक्की की और इतने मशीनीकरण किया, जिसकी वजह से वो जो है आगे निकल गए. लेकिन उस भागदौड़ में हमने ये देखा कि हमारा जो भारतीय कंसेप्ट है, जो भारतीय परंपराओं की संस्कृति के जो कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं छूट रहे थे, जिसको हम भूल रहे थे. तो अब ऐसा प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से कि उन जड़ों को फिर से मजबूत करना है, तो जिसके माध्यम से हम जो है फिर से उसको रिवाइव कर सकें अपने इंडियन कंसेप्ट्स को, बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग वेरी गुड civilization. We had a very good civilization and cultural practices which we followed since centuries. और कई जो है शताब्दियों से 500 साल 1000 सालों से हम जो है एक कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं, एक संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें बहुत ज्ञान है और काफी जो है फायदेमंद है हमारे लोगों के लिए, सबके लिए. और किस किस तरीके से है ये आगे हम चर्चा करेंगे, तब समझेंगे. अगला जो आवश्यकता है कि IKS को क्यों जो है पढ़ा जाए या इसके बारे में क्यों चर्चा की जाए, वो है कि IKS is also much required solutions for several modern problems that lies in our ancient texts, from chronic disease to spiritual enlightening, and lot of already provided by our ancestors to work on with such problems. हमारे ancestors ने
उन कार्यों के ऊपर बहुत उन समस्याओं के ऊपर बहुत कार्य किया है। जैसे कि जो बहुत खतरनाक जो रोग हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद अध्यात्म के ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया, और उस अध्यात्म के माध्यम से अपने आप को जो है वो किस तरीके से मानसिक रूप से एक व्यक्ति अपने आप को समृद्ध रख सकता है, बहुत अच्छे पोजीशन में रख सकता है। तो ऐसा बहुत सारा ज्ञान हमारा एंशियंट टेक्स्ट में है, हमारे जो पुरातन ग्रंथ है, हमारा जो टेक्स्ट है, जो लिटरेचर है, उसमें उपलब्ध है। तो हमको जरूरत ये है कि किस तरीके से हम जो है उस आईकेएस को, यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को जो है रिवाइव करें और उसकी चर्चा करें। इसके साथ ही कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है बनाए हैं आईकेएस ने, उसको भी समझना जरूरी है कि जिसके माध्यम से हम इसको सरवाइव करने में कैसे मदद कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, सबसे पहले हमको दोबारा से ये समझना है कि हमारे जो ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका जो ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास है और ऐतिहासिक जो ज्ञान है उसको किस प्रकार से जो है हम वो आज के दौर में भी वो जो है एकदम परफेक्ट है। इफ वी स्टार्ट यूजिंग दैट एंड फॉलोइंग दैट, आज भी वो काफी फायदेमंद है, फ्रूटफुल है, उसको हमको समझना है। उसके पश्चात नेक्स्ट है टू अप्रिशिएट द साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज। इसके ऊपर चर्चा हो रही। केवल जो है हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं कि फिलॉसफी और दूसरे जो अन्य क्षेत्रों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा बात करती है, केवल वही नहीं, हम ये भी जो है लोगों को बताएं कि हमारा जो ज्ञान है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। क्योंकि अभी भी जब उसके ऊपर शोध किए जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आ रही हैं जो हम वेस्टर्न सिस्टम को उसका उदाहरण देते हैं या डेफिनेशंस देते हैं, तो वहां से शुरू करते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना, जबकि वो हमारे यहाँ पर जो है वो भी वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध होती जा रही हैं। बहुत सारी बातें हो गई और आगे रिसर्च के माध्यम के शोध के माध्यम से हमको और भी ऐसी सिद्धता साबित करनी है। वी नीड टू कंप्लीट दैट notion that our system had the scientific pattern of working or knowledge, उसको हमको साबित करना है। To explore the contributions of IKS to various fields including science, technology, medicine and governance। ये देखिए, कई क्षेत्रों में जो है हमारे पुरातन लोगों ने, पूर्वजों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसको ढूंढना, उसके बारे में चर्चा करना और लोगों तक पहुंचाना। और इसमें केवल जो है फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स ही नहीं है, इसमें केवल जो है मेडिसिन ही नहीं है, इसमें वो बातें भी हैं जो आज के दौर पे सभी करते हैं, यानी कि पूरा विश्व करता है, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और गवर्नेंस जो है किस तरीके से रखना चाहिए, एक जो है शासन किस प्रकार से चलना चाहिए, उसके ऊपर भी इसमें ज्ञान निहित है। वी नीड टू फॉलो दिस एंड वी विल सी दैट वी मे गेट सम सॉल्यूशंस आउट ऑफ दैट। सो it is the learning objective of the IKS. Next is to promote the research application of IKS in modern context. आज के समय में किस प्रकार से जो है हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो मददगार साबित हो सकता है, उसके उन रिसर्चेस को, उन शोध को करने की आवश्यकता है और उसको अप्लाई करने की आवश्यकता है। अब इसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है आप आगे देखेंगे कि हमने किस प्रकार से जो है लोगों को उससे उससे परिचय कराया, उस विधा से परिचित कराया। द एक्सपर्टाइज विच दिस the people of this country had, and we have introduced the same to the world, and now the world is enjoying, and they are manipulating to some extent, and some information and messages are coming back from the western part or from the other part of the world। आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। अभी बात करते हैं कि आईकेएस को प्रमोट करने के लिए आईकेएस डिवीजन क्या क्या कार्य कर रहा है। Indian knowledge system is to promote it through various events such as a launch of books on एक IKS। भारतीय ज्ञान परंपरा पे बहुत सी किताबों का जो है का प्रकाशित की जा रही हैं। नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन डिफरेंट थीम्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो डिफरेंट थीम्स हैं उसके ऊपर जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। वर्कशॉप्स ऑन रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, वर्कशॉप्स हो रही है कि किस तरीके से उसमें रिसर्च की जाए और उसकी जो है प्रपोजल्स किस प्रकार से बनाया जाए। डे लॉन्ग सिंपोजियम ऑन डांस एंड स्कल्पचर्स, यानी कि विभिन्न विधाएं जो यहाँ पर डेवलप हुई एंशियंट टाइम पे, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के द्वारा
इस पे जो है सिंपोजियम्स जो है आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके। द कॉन्फ्रेंस ऑफ धारा, दैट इज भारतीय पारंपरिक कृषि मेला, इस तरीके से कुछ और आयोजन किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से जो है आईकेएस को, भारतीय ज्ञान परंपरा को जो है प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे सेंटर्स भी जो है बन गए हैं। आप देखिए कि कितनी तेजी से ये कार्य चल रहा है। और जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो रिसर्च सेंटर्स लगभग 29 जो है वो डिसाइड किए जा चिन्हित किए जा चुके हैं और जहां पर ये कार्य आरंभ हो चुका है। नंबर ऑफ आईकेएस टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स 17। टीचर्स को भी जो है ट्रेन किया जाएगा इस फील्ड में, दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड those who can give the same knowledge to their students. So these centers will train the teachers for in this particular theme, that is IKS, भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर इन टीचर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर 17 ऐसे केंद्र जो है निर्धारित किए जा चुके हैं। आईकेएस भाषा केंद्र, भाषा के ऊपर भी जो है इसमें कई केंद्र बनाए जा चुके हैं। दीज सेंटर्स आर मेड अक्रॉस द नेशन फॉर रैपिड प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईकेएस। जो भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के जो उद्देश्य हैं उनको बढ़ाने के लिए और उनके ऊपर चर्चा करने के लिए पूरे राष्ट्र में जो है इस तरीके के सेंटर्स खोले जा रहे हैं। कुछ और किताबों का उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहूंगा जिसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है तो वो इसमें अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। दैट इज वैदिक एंड इंडियन विजडम, दीज आर द नेम्स ऑफ द बुक। Ancient Indian architecture, traditional medicine in Indian medical science, political thought of ancient India, warfare in ancient India। तो इस तरीके की कुछ बुक्स को भी जो है ये प्रमोट करते हैं। अब ये सारा ज्ञान, this all knowledge, from where we are all are getting this knowledge, actually these are from the manuscripts which we had in the form of different Vedas in this country। लेकिन अब अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी पांडुलिपियां हैं उसको यूनेस्को के द्वारा भी जो है सम्मानित किया गया है और उनको जो है उनको एक आदर्श स्थान दिया गया है। किस तरीके से उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है, हमारे जो पुरातन पांडुलिपियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद पता डिपिक्ट, ये नीचे जो आपको इमेज देख रही है इसमें इसमें जो है ऋग्वेद पता की जो है कुछ पांडुलिपियां दर्शाई गई हैं। और जब ये हमारे उनको भेजी गई जो है वर्ल्ड फोरम को, तो उन्होंने इनको पूरा स्थान दिया है। सेकंड वन इज गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स। और अब जो है इनको जो यूनेस्को ने जो स्थान दिया है वो वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में इनको स्थान दिया है। और ये कहा गया है कि ये जो है ये जो पांडुलिपियां हैं ये अपने आप में बहुत अद्भुत हैं, बहुत इनमें जो है नॉलेज है। द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर प्रोग्राम सीक्स टू गार्ड अ जाइंट कलेक्टिव एमनेशिया, कॉलिंग अपॉन द प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूएबल आर्काइवल होल्डिंग्स एंड लाइब्रेरी कलेक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंश्योरिंग द वाइड डिसेमिनेशन। कहने का तात्पर्य ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य करती है उसके माध्यम से जो है ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में और बड़े बड़े आर्काइव्स जो उनकी हैं ऑलरेडी हैं वहां पर इसको स्थान दिया है, जिसके माध्यम से लोग इससे जुड़ सकते हैं और इनको समझ सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल बीइंग डन बाय यूनेस्को आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पांडुलिपीज, these the ancient Pandulipis which we have with us। UNESCO declared the oral tradition of Vedas is the masterpiece of oral and intangible heritage of humanity। मानव सभ्यता के लिए ये एक मास्टरपीस बताया गया है। जितने भी हमारे वेद के जो ट्रेडिशंस हैं जिसको ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो चलती चली आ रही हैं काफी अधिक मात्रा में, क्योंकि उतनी संख्या में उस जमाने में ना पांडुलिपियां थी ना जो है किसी प्रकार के पेपर था जिसपे कि वो ये राइटिंग्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर पाते। किंतु ओरल माध्यम से ये जो है उस एंशियंट टाइम से चला आ रहा है लगातार। तो इसलिए यूनेस्को ने इसको जो है बहुत बड़ा जो है सम्मान पत्र दिया है, सम्मान दिया है और डिक्लेयर किया है कि इट इज एन ओरल ट्रेडिशन का, ये जो वेदास का है ये हमारा जो है मानव सभ्यता के लिए बहुत बहुत उपयोगी है और बहुत फायदेमंद है। The Director General of UNESCO said that the chanting of Vedas is an outstanding example of heritage and form of cultural expressions। हमारा जो सांस्कृतिक एक्सप्रेशन करने का जो तरीका है इन वेदों के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से जो कि वेद में उल्लेखित हैं, ये एक जो है बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा जो है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने इसको सराहा है, इसकी प्रशंसा की है।
access to manuscripts. You can go to have such kind of manuscripts for your knowledge and for your information, and you can visit to Bharatiya Kriti Sampada, that is Rashtriya Pandulipi Mission provides for a web page where one can सर्च दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स। आप देख सकते हैं वहां पे। जब चर्चा कर रहे हैं हम इतनी सारी कि जब हमारा पुरातन इतिहास, पुरातन जो ज्ञान है वो बहुत बहुत अद्भुत था और बहुत अच्छा था, तो वो ज्ञान एक्चुअली में मिल कहाँ रहा था हमको? हम वो वेयर इट इज एग्जिस्ट एक्चुअली, दैट एग्जिस्ट इन द वेदास and the Mahapuranas and other the literature which we have with us. So basically we will start with we have 4 Vedas: the Rig Veda, Samaveda, Yajurveda and Atharveda. This is one of the best source of ancient Indian history in Vedic literature. Vedas are formed the Indian scripture. The idea of and practices of Vedic religion are codified by the Vedas, and they also form a basis classical Hinduism. Hinduism के जुड़े हुए लोग जो है इसको पूरा निभाते चले आए हैं, करते चले आए हैं, और ये जो है एंशियंट टाइम से जो है वो चलता चला आ रहा है। 4 वेद, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। इनकी कुछ फीचर्स और इनकी कुछ स्पेशलिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्हाट मींस द ऋग्वेद? It is the earliest form of Veda. That is, Rigved is actually the earliest form of Ved. सामवेद, अर्लीस्ट रेफरेंस फॉर सिंगिंग, संगीत की या गाने की कुछ जो है उसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो सबसे ज्यादा जो है वो सामवेद में मिलती है। उसमें इन ऋचाओं को जो है देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इस तरीके की जो ऋचाएं हैं वो वहां पर मिलती हैं। ऋचाएं मीन्स द पोइट्री और द म्यूजिकल श्लोकास और लाइक दैट। यजुर्वेदा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ प्रेयर्स। यजुर्वेद में जो है वो प्रेयर्स की बुक इसको कहा गया, माना गया है। एंड अथर्ववेद, द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स। मैजिक फॉर करने के जो तरीके हैं उसमें कुछ उल्लेखित हैं, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है। लेट्स हैव सम मोर फीचर्स टू अंडरस्टैंड दिस। The meaning of word Rigved is that is to praise. Ved means knowledge. So rig means praise, यानी कि प्रशंसा करना, और वेद का अर्थ है ज्ञान। तो वेद जो है किसी किसी के व्यक्ति के ऊपर या किसी खास उसके ऊपर जो नहीं कहा गया, बल्कि वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान। और ऋग का अर्थ है प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना, यानी कि हमको हमेशा ज्ञान की प्रशंसा करनी चाहिए और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। इसलिए इस पहले वेद का नाम जो है वो ऋग्वेद है। इसके कुछ और चीजें देखते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेदा एंड ओल्डेस्ट नोन एज वैदिक संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम 11,000 टू 1800 BCE। क्राइस्ट से 1100 से लेकर के और 1800 साल पहले जो है इसके एग्जिस्टेंस की बात की जा सकती है। Rigved is the oldest of the 4 Vedas, containing 1028 hymns, suktas, and 10,600 verses divided into 10 mandalas, that is books. These hymns are dedicated to Rigvedic deities and discuss cosmology too. ये हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उनके ऊपर जो है उनके द्वारा जो है उनको डेडिकेटेड है, उनके द्वारा रची गई हैं, ऐसी मान्यता है। और इसमें जो है बहुत सारी बातों का उल्लेख है, जिसमें से कॉस्मोलॉजी की भी चर्चा इसके अंदर की गई है और लिखी गई है। Samved, known as the Ved of melodious and cants, Samved dates back to 800 to 1200 BCE. This Veda is related to public worship. Public worship जितनी भी हैं उनके ऊपर जो है सामवेद की चर्चा होती है। और मेलोडियस कैंट्स हैं, इसमें मैंने कहा था कि श्लोक जो है वो संगीतमय हैं। उनको जब श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो वो एक संगीत की तरह लगता है, एक जो है गीत की तरह लगते हैं, इसलिए इसको जो है म्यूजिक सामवेद को कहा गया है, the book of music. And few more features we can to understand this. There are 1549 verses, and except 75 verses, all have been taken from Rig Ved. Means Samved is having only 75 verses, whereas other have been taken from the Rig Ved. There are 2 Upanishad embedded in Samaved, that is Chandogya Upanishad and Kena Upanishad. The Samaved is considered as the root of Indian classical music dance. It is considered as the storehouse of melodious chants, though it has lesser verses than Rigved. However, its texts are larger. तब भी हालांकि उससे छोटा है और काफी कुछ ऋग्वेद से लिया है, तब भी इसमें जो है बहुत बड़ा है और इसमें काफी जो है जानकारी है क्लासिकल म्यूजिक और डांस के ऊपर इसकी चर्चा
होती रहती है। अथर्ववेद की बात करते हैं। It dates back to 800 to 1000 BCE, stands to mean a Tatpurush compound of Atharvan, an ancient sage and knowledge. Atharvan means know, यानी कि अथर्वन का जो अर्थ है, और ये किसी हमारे एक ऋषि मुनि के नाम के ऊपर पड़ा है, इसका नाम है, नामकरण हुआ है, जिसका अर्थ है जानना, नो, है ना, जानकारी होना, जानकारी लेना, कुछ इस तरीके से जो है इसको हम समझ सकते हैं। और यानी कि कुल मिलाकर के ज्ञान की जानकारी लेना, इसका जो है पूरा अर्थ निकल के आता है। फीचर्स: द डेली procedures of life are very well enumerated in this Veda. Daily proceedings, daily working, daily rituals और daily followings, वो सब इसमें जो है चिन्हित हैं, अंकित हैं। इसके माध्यम से जो है हम उनको समझ सकते हैं। It has 730 hymns, suktas, 6000 mantras and 20 books. पेपलदा एंड द सौकन्या आर टू सर्वाइविंग recensions ऑफ अथर्ववेद, यानी कि इनके जो दो पेपलदा और सौनक्या, ये आज भी जो है हमारे बीच में मौजूद है, और इसका जो है प्रयोग उपयोग किया जा रहा है। ये called a Veda of magical formulas. It includes the three primary Upanishads, that is Mandukya Upanishad, मुंडका उपनिषद एंड दी प्रसन्ना उपनिषद। इसके अंतर्गत तीन जो है उपनिषद भी आते हैं। इसमें मैजिकल फॉर्मूलाज जो है बहुत सारे अंकित हैं, लिखित हैं, उनकी जानकारी और ज्ञान इसमें बहुत है। अनलाइक सामवेद वेयर हाइम्स आर बोरोड फ्रॉम ऋग्वेद, हाइम्स ऑफ अथर्ववेद आर यूनिक एक्सेप्ट अ फ्यू। कुछ जो है उनको छोड़ दें, हाइम्स को, कुछ श्लोकों को छोड़ दें अगर, तो बाकी सब जो है इसकी यूनिकनेस है, यानी कि अथर्ववेद में जो चिन्हित हैं, जो अंकित हैं, वो अलग हैं दूसरे वेदों से। डिफरेंस बिटवीन द वेदास एंड उपनिषद: द वेदास आर द लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट originated in ancient India, composed in Vedic Sanskrit. The text constitute the oldest layer of Sanskrit literature and oldest scriptures of Hinduism. भारतीय हिंदुइज्म की यदि बात करें तो उससे जुड़ी हुई जो है वो बहुत सारी जानकारी इसमें है, जो कि संस्कृत में लिखित है, संस्कृत में रचित है, और सबसे पुरानी जो है ज्ञान इसके अंदर, इन वेदों के अंदर है। और उपनिषद क्या है? दी उपनिषद आर द लेट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस टीचिंग एंड आइडियाज स्टिल रिवर्ड इन हिंदुइज्म। आज भी जो है ये जीवित हैं, ऐसे कुछ जो है आइडियाज जो कि रिलीजियस टीचिंग्स जो हमारी होती हैं उसके अंतर्गत जो है उल्लेखित हैं, जो आज भी जीवित हैं और लोगों द्वारा प्रयोग की जा रही है कई कई स्थानों पर। द उपनिषद एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल आइडियाज इन द एंशिएंट इंडिया, marking a transition from Vedic ritualism to new idea and institutions. So these are actually developed with this thought that the original thought of from the Vedas, some more rituals are being mentioned into that and some more ideas are being given into them. तो उपनिषद उसके बाद जो है आए हैं, और वैदिक संस्कृत, लेटर वैदिक संस्कृत में इनका जो है पूरा मिलता है उल्लेख। पुराणास, कुछ पुराण भी हैं हमारे, जिनके माध्यम से जो है हम काफी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, या होती है, लोगों को होती आई है, जैसे कि, और ये सब जो है हिंदू फेथ के ऊपर डिपेंड कर। ट्रांसलेटिंग लिटरली एंशियंट और द ओल्ड, दे वर रिटन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स containing the knowledge of myths and genealogical informations, important figures. The Puranas were revered the important texts in Hinduism and played a significant role in Indian historical events. There are total 18 Puranas, 18 पुराण हैं। There are also the grouping of Puranas such as Mahapuran, Upapuran, Sthala Puran, Kul Puran, and the Jain Puran. Scholarly heavily contest the origin of Puranas, while it is often credited to Vyasa. महर्षि व्यास एक हुए हैं, उनको ये क्रेडिट देते हैं लोग बाग, लेकिन बट इट इज नॉट, you can say that it is being originated when it was originated. So who narrated the Mahabharata, जिन्होंने महाभारत का नरेशन किया था, ये भी एक पुराण है। It is more likely that many individuals contributed to their creation. ऐसा भी कहा जा रहा है कि और भी कुछ लोगों ने या ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर जो है इसको बनाने में मदद की हो, या इसके ऊपर जो है कई चर्चाएं की हों। Their dates of creation span more than 1000 years from the middle of the first millennium, that is BCE to 1000 CE.
It is unknown why the texts were specifically created. However, the knowledge contained within, such as pilgrimage informations, temple locations, and detailed accounts of local geography, might have been to preserve the information for future generations. Now you can see that these Purans have such kind of information into that. With the help of that, people used to visit for their go to different pilgrimage, यानी कि वो जो है तीर्थ यात्री के रूप में उन स्थानों पर जाते थे, और उस स्थान पर वहां की जोग्राफिकल कंडीशंस क्या होंगी और वहां टेम्पल की लोकेशन क्या होगी। जैसा कि हम देखते हैं कि जितने भी जो है हमारे जो कुछ टेम्पल्स हैं वो एक ही लाइन में अलाइंड हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बात करें, ये शायद आपने सुना भी होगा। कहने का मतलब ये सारी जानकारियां इन सब में हैं। तो जब भी जो तीर्थ यात्री, दर्शन यात्री उस ओर जाते होंगे उस दौर में, जबकि इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो फिर उनको ये सारी जानकारी काफी मदद करती होंगी, ये इंफॉर्मेशंस बहुत हेल्प करती होंगी उनको अपने उस मूवमेंट के दौरान, जब वो एक अपने घर से जो है इन सब स्थानों पर जाते होंगे। और ये लगातार जो है जनरेशन से, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, और ऐसे चलती चली आ रही है ये सब जानकारियां जो कि लोगों के पास थी। और तीर्थ यात्री केवल अभी जाना नहीं शुरू हैं, ये तो हमेशा से, जब से यहाँ पर जो ये सब लोग हैं और हमारा वेद है, हमारे वो हैं जो भी इनको मानने वाले लोग हैं, वो हमेशा से जो है तीर्थ के लिए जाते रहते थे। और घर से जब तीर्थ यात्रियों को विदा करते थे पुराने दौर पर, आज भी जो ये परंपरा कई ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकती है कि उनका कंप्लीट जो है उनका बिल्कुल बैंड बाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ, गीत के साथ, और उनको माला पहना करके इस तरीके से विदा किया जाता था। क्योंकि वो उस वक्त जो तीर्थ यात्री जाते थे वो बहुत कठिन परिस्थितियों में उन तीर्थों को पूरा कर पाते थे। तो ऐसी उम्मीद लोगों को नहीं होती थी कि अगर ये वापस सकुशल आ पाएंगे कि नहीं। तो इनकी विदा लगभग उसी तरीके से की जाती थी जिस तरीके से कोई व्यक्ति ये जीवन छोड़ करके जा रहा हो। तो ऐसी परंपराएं हैं। बट नाउ वी हैव lots of facilities and transportation system. With that, these rituals and the customs are not being followed by the people, and especially if we see in cities or in other places, right? So this is all about the information about the different Puranas, what knowledge they have with that. Now discuss some more important issues or the knowledge which are there in our ancient system, like the number system in India, historical events. In the early Vedic period, that is 600 to 1200 BC, a decimal system of numbers was already established in India, together with rules for arithmetical operations, that is Ganit, and geometry, that is Rekha Ganit. These were encoded in complex system of chants, prayers, hymns, curses, charms, and other religious rituals. कहने का तात्पर्य है ये गूढ़ रहस्य जो सारा हैं वो हमारे कहीं ना कहीं किसी श्लोक में है, किसी मंत्र में है, किसी हाइम में है, किसी जो है किसी वाक्य में है, या फिर हमारे जो रिलीजियस रिचुअल है, धार्मिक जो परंपराएं हैं, ये उनके अंदर जो है छुपी हुई हैं, उनके अंदर निहित हैं। और वर्षों से चूंकि इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, इसके ऊपर कोई जो है किताबें नहीं लिखी जा रही है, इसके ऊपर कोई शोध नहीं किया जा रहा, इसलिए उसको साइंटिफिकली सही बता पाने में हम लोग जो है पीछे हट जाते हैं, या हम उनको डिफेंड नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। दैट्स व्हाई we can see these kind of knowledge we have in these kind of systems or the rituals we follow, हमको अभी जो कार्य करने के लिए जो है उत्साहित किया जा रहा है सभी लोगों को, या कि कहीं ना कहीं इस पे रिसर्च की जाए, शोध की जाए, जिससे कि हम इनको प्रूव कर सकें, यस इट इज बीइंग मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर, और द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्स और द कैंट और द प्रेयर इज दिस एक्चुअली, एंड विच वी आर फॉलोइंग सिंस centuries. And the meaning of this is actually this, and this is correct. If we do this, it is correct for the mankind, for the people, for the society, for the nation. It is required to be proven. It is required to be validated by the people by conducting research. That's all we need from the people, from the teachers, or from the research scholars. So और उसी के ऊपर पूरा चिंतन मंथन चल रहा है, और धीरे धीरे जो है वो आगे बातें बढ़ाई जा रही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक Indus Valley civilization, the oldest civilization. And who has said this? Few days back, 1 or 2 weeks back,
a person when Honorable Prime Minister of India visited to Israel, then the Prime Minister of Israel, Netanyahu, he said, "Oh, we were the oldest civilization. India was the oldest civilization." In his speech, he has mentioned that Indus Valley civilization. He has also mentioned his own civilization, whereas he said that these two civilizations are the oldest one. So, in this way, he is trying to connect with the people or with the Prime Minister of India. So, what I want to say that people have started saying this and they have accepted that the Indus Valley civilization is the oldest one, where we have developed a lot. The growth of that period was much better than the what being done in other parts of the world. विश्व के दूसरे हिस्से में किस तरीके से लोग रह रहे थे और उनके ऊपर उनको कितना ज्ञान था, उनकी शिक्षा दीक्षा कितनी थी, उनका नॉलेज कितना था, उसके कंपैरिजन में हम अगर बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको विभिन्न पुरातन विद्वानों द्वारा जो प्राप्त हुआ है नॉलेज, उससे ये पता लगता है कि हम उस वक्त बहुत सरसभ्य थे, हम उस वक्त बहुत समृद्ध थे. We were able to have that kind of knowledge in that period also. Which knowledge? The knowledge of decimal system, the knowledge of counting and recordings. यानी कि हम उस वक्त एक सिंबल्स यूज करते थे जिसके माध्यम से हम जो है अपनी काउंटिंग्स को और रिकॉर्डिंग को, क्वांटिटीज को जो है रिकॉर्ड कर लिया करते थे. सो दैट type of system we have developed in that period of time, and after that we have developed a lot, and that is needed to be taken out from with the help of the research into this field. कुछ और लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं इसमें, इंडियन नॉलेज सिस्टम में, पुरातन ज्ञान में. तो उनको जो है यहाँ पे मैं कुछ ही लोगों को उल्लेखित कर पाऊंगा, लेकिन आप उससे सहमत होंगे कि द फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज श्री भारती कृष्णा जी, जिन्होंने आज वैदिक मैथ्स का जो है आविष्कार किया था. एंड ही रोट अ बुक बाय द नेम ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स. इट कंटेन्स वैदिक सूत्रास और ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मूलाज. जो हमारे सूत्र हैं, जिनको हम सूत्र कहते हैं, जैसे कि वो एक्चुअली में वो फॉर्मूला है जो कि शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं किसी भी गणित की गणना को करने के लिए. और आप में से, हम में से हो सकता है कई पेरेंट्स ने अपने विद्यार्थियों को, सॉरी अपने बच्चों को जो है वहां पर भेजा हो वैदिक गणित सीखने के लिए, जिससे कि उनकी गणनाएं, उनकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएं. और there are several centers which are giving some these kind of teachings to the students. प्राइवेट सेंटर्स भी हैं, बट ये जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है. दिस इज द बिग प्रॉब्लम. इफ वी वुड हैव अडॉप्टेड दिस सेंचुरीज बैक एंड और उसको छोड़ा नहीं गया होता कुछ शताब्दी पूर्व, यदि इन सब बातों को, इन सब अच्छी चीजों को, प्रैक्टिसेस को छोड़ा नहीं गया होता, तो शायद हमारे छात्र और हम सभी लोग भी गणना करने में काफी तेज होते, ऐसा मेरा मानना है. So, who's the man behind of this to develop this kind of quick tricks to have the mathematical calculation in a very short period of time is the Shri Bharati Krishna Tirath ji. Next, we are moving ahead. How did ancient India contributed in mathematics? जैसे कि ऊपर वैदिक मैथमेटिक्स की हमने चर्चा कर ली, लेकिन इसके अलावा भी बहुत लोगों ने बहुत कार्य किया है, जिसको आप भी बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ पर दोहरा देता हूँ. द कंसेप्ट ऑफ जीरो. We know that zero is being given by India, or that made seminal contribution to the study of trigonometry, algebra, arithmetic, and negative numbers among the other areas. Perhaps most significantly, the decimal system that we still employ worldwide today was first seen in India. पहली बार भारत में जो है वो डेसिमल सिस्टम को देखा गया, और that is being adopted by the whole world. और इस तरीके से जो है जो गणनाएं हैं इतनी लंबी और इतनी अच्छी और इतनी सटीक हो पाती हैं. अच्छी से तात्पर्य सटीक, करेक्ट. सो द गोल्डन पीरियड ऑफ रेंज फ्रॉम 4th to 16th सेंचुरी. जो हमारा गणित का ऊपर जो कार्य हुआ है, उसमें जो गोल्डन पीरियड हम जिसको समझ सकते हैं, स्वर्ण काल जिसको कह सकते हैं हिंदी में, वो जो पीरियड है वो है 4वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक. और इस दौरान किस किस लोगों ने जो कार्य किया है, जो स्कॉलर्स रहे हैं इसके ऊपर कार्य करने वाले, उनके नाम हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, and Bhaskara too. So these were the people who have contributed a lot into these fields, not in the mathematics, but in astrology also, that I'll tell you in the next slide.
तो इन लोगों ने इतना बेहतरीन, इतना अच्छा कार्य किया है जिसको हमको फिर से स्थापित करना है और लोगों को, यानी कि पूरे विश्व को बताना है कि ये जो नॉलेज है हमारे पास, that was there in our system, in our custom, but needed to be सर्च्ड अगेन. एस्ट्रोनॉमी, जैसे इसकी चर्चा करें हम कि एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो कितना कार्य किया गया भारतवर्ष में. द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया डेट बैक टू एटलीस्ट 2000 BCE, where they were found in Rigved, that is 1100 to 700 BC, before Christ exist. One of the primary and foremost text of Hinduism, the ancient India astronomers used the stars and planets to create astrological charts and read omens. मतलब these kind of informations and these kind of the knowledge we have in the before the Christ exists, that is 1700 till 1100 to 1700, where we can read the omens. omens मतलब हम जो भी घटनाएं होने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में, फॉर एग्जांपल आपका सूर्य ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है, या तो किसी प्राकृतिक कोई बड़ी आपदा आने वाली, उसको समझने में बड़ी आसानी से ये लोग जो है समझ लेते थे. वो कैलकुलेशंस और गणनाएं किस प्रकार से करते थे, यानी कि वो उसका पूरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बना लेते थे. और इसका बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको आगे दूंगा जिसमें आप भी सहमत होंगे. द ऋग्वेद shows that the Indian divided the year into 360 days and the year was subdivided into 12 months of 30 days. ऋग्वेद मीन्स 10,000 years बैक, और कितना जो है पुरानी बात कर रहे हैं. ऋग्वेद में ये कहा गया है कि एक वर्ष में जो है 360 दिन हो सकते हैं, जो कि आज हमारे पास 365 दिन है, लगभग उसके नजदीकी हैं काफी हद तक. और कहीं जो गणनाएं हैं हमारे, अगर उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलेंगे, हम चार्ट मेकिंग जो करते हैं उसके हिसाब से चलेंगे, तो क्या सही है क्या गलत है उसको भी प्रूव करने की जरूरत है. वेदर सी देयर देयर इज 365 days और 360 days that is needed to be done, but it was all done thousands of years back. The Jyotish Vedant, that was the thing which I would like to tell you. The first Vedic text to mention astronomical data records events going back as far as 400 BC, although many astronomers believe that, archaeoastronomers believe that the text may include observation from early as 11,000 BCE. मतलब ये अभी साबित नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा विश्वास जताया जाता है कि इसके जो लगभग 4,000 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की, इसके बारे में बताया गया है. और ये ज्ञान हमको तब से प्राप्त हुआ है, किंतु उसकी जो असली जो तारीख है या जो समय है उसको अगर गणना की जाए, उसको आंका गया है कि लगभग 11,000 वर्ष पूर्व ये सब बातें की गई होंगी, जो कि ज्योतिष वेदांग. अब ज्योतिष वेदांग जो कि ये सारी गणनाएं करता था कि कब जो है, जिसके माध्यम में आज भी गणनाएं करते हैं, आज भी हमारे साथ ये ज्ञान उपलब्ध है और हम अपनी गणनाएं उसी हिसाब से करते हैं. हम जो है वो न मशीन्स की तरफ जाते हैं, न हम जो है अपने इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाते हैं. वी आर एबल टू परफॉर्म ऑल दीज कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ द ज्योतिष वेदांग. उनका जो फॉर्मूलाज हैं, उनकी जो तरीके हैं, उसके माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है ये किस दिन पड़ेगा, सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ेगा और चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ेगा. तो ये आज भी, यानी कि 11,000 वर्ष पूर्व जो है उसका उल्लेख हो सकता है, जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता है. हम चलो उसको 4,000 वर्ष पूर्व ही मान लेते हैं, जिसमें ये साबित किया गया है कि 4,000 वर्ष पूर्व था. तो 4,000 सालों से जो है हम उस प्रक्रिया को अपनाते हुए चले जा रहे हैं, उस ज्ञान को जो है लगातार इस्तेमाल करते हुए चले जा रहे हैं और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट इज द बिग थिंग. यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ गुड the ancient people have done, good knowledge they people have, and they have given good knowledge to the people of this continent, this area. पंचांग आज भी घरों में इस्तेमाल होता है, काफी घरों में इस्तेमाल होता है पंचांग. दिस इज नथिंग बट द इंडियन कैलेंडर सिस्टम, है ना. Astronomical instruments which we now also have, those yantras, जंतर मंत्र of राजा जय सिंह, सवाई माधो जयपुर. यानी कि जयपुर में जो जंतर मंत्र बना हुआ है वो भी जो है कैलकुलेशंस करने में माहिर है. वो दिन का समय आपको बता सकता है. और वो यानी कि इस तरीके की यंत्र पुरातन काल से जो है हमारे पास चले आ रहे हैं. नॉलेज था तभी तो उस समय जो है सवाई जय सिंह जी ने उसको बनवा पाया. अगर हमारे लोगों को वो ज्ञान ही नहीं होता तो कैसे उस यंत्र को बता देते कि धूप जब किस एंगल में जो है कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, और वो समय का दिन का क्या समय हो रहा है, ये उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं. तो ऐसा बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पुरातन जो ज्ञान है वो काफी रिच था, काफी समृद्ध था.
उसको किस तरीके से आगे फिर से लेके चलना है। द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कैलेंडर, कुछ इसके बारे में और मैं बातें आपको बताना चाहूंगा जिसके माध्यम से आपको और ये सही समझ में आएगा। द नेम ऑफ पंचांग केम फ्रॉम द 5 प्राइमरी एलिमेंट नोन एज अंगास। अंग यानी कि 5 एलिमेंट, 5 अंग हैं, उसके 5 प्रकार हैं, पांच पांच उसमें विभाजित कर रखा है। दैट इज तिथि, डेट, वार, नक्षत्र, योग एंड करना। और ये जो है कैलेंडर हमारा जो आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये विक्रम संवत, द विक्रम संवत आल्सो रिगार्डेड एज द विक्रमी कैलेंडर is a historical calendar for the Hindus in India. Vikram Samvat is also the official calendar of Nepal and is named after the king विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के कार्यकाल के दौरान जो है इसके ऊपर कार्य किया गया लोगों के द्वारा, और फिर उन्होंने एक कैलेंडर जो है निर्मित किया, और गणनाएं करने के पश्चात और लगातार वही पद्धति जो है उस समय से लेकर आज भी जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रत्येक घरों में जो इन मान्यताओं को मानते हैं, दोज हु फॉलोज दीज रिचुअल्स कस्टम्स एंड फॉलोज द हिंदुइज्म, दे आर हैविंग दीज पंचांग्स, एटलीस्ट वन पंचांग एट देयर होम, बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू दैट। और वो कौन कौन सी जानकारियां उसके अंदर और होती हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तिथि यानी कि ल्यूनर डे, कौन सा ल्यूनर डे चल रहा है वो उससे पता लगता है। एस्ट्रिज्म यानी कि नक्षत्र, ऊपर जो है तारों की पोजीशंस क्या है, उससे जो है नक्षत्र उसको कह सकते हैं। नेम ऑफ वीकली वीक डे, दैट इज वार, एंड द ला कर्ण, द ल्यूनर डे एंड द योग। और इन सब का जो कैलकुलेशंस है, यानी कि सन और मून की जो जो उनकी जो जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है उसकी जो गणना है, उसको योग के रूप में जाना गया है। ये 5 एलिमेंट्स के पूरा डिस्क्राइब किया है। फिर उसके बाद बात करते हैं, पंचांग इज अ कैलेंडर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग हिंदू, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। इट इज रिवर्सनली वर्शिप्ड एंड रीड इन हिंदू हाउसहोल्ड्स। लगभग हर घर में जो है ये इसको रखा जाता है और इसके अनुसार कार्य किए जाते हैं। वो कार्य कौन से हैं जो इसके अनुसार किए जाते हैं वो बताता हूं आपको। यानी कि जो 5 कंपोनेंट्स पंजाब के प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किस वक्त आप जो है धार्मिक कार्य कर सकते हैं, किस वक्त जो है कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, या घर के अंदर जो है धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जो हमारे त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो कब मनाए जाएंगे, उनका उनका समय क्या होगा। कार सेरेमनीज वगैरह यानी कि रथ यात्रा वगैरह ये सब कब होंगी टेम्पल्स में जो होती हैं। ऑस्पिशियस और इन ऑस्पिशियस टाइम, यानी कि अच्छा समय कब है और बुरा समय कब है, उसी हिसाब से जो है कार्यों को संपन्न किया जाए, ऐसा इसमें उल्लेख रहता है। गुड डेज फॉर ट्रेवल, यात्रा करने के लिए अच्छे शुभ दिन कौन से होंगे। प्रपोजिशंस टाइम, मुहूर्त यानी कि मुहूर्त, उद्घाटन करने के लिए, कोई नया कार्य करने के लिए अच्छा मुहूर्त कौन सा है, ये भी इसमें जो है मेंशन रहता है। शादियां वगैरह कब होंगी, और आपके जो जनेऊ धारण करने की जो प्रक्रिया जो कि बनाई जाती है हिंदुइज्म के द्वारा, वो सेरेमनी कब होगी, ये सब इसमें जो है उल्लेखित रहता है। उसमें सही और गलत समय का उल्लेख किया जाता है। सो पंचांग इतनी सारी इंफॉर्मेशंस लेके रहता है, इसीलिए हर घर में जो है ये मौजूद रहता है, जो भी इनको मानने वाले लोग हैं। A Panchang also provides the planetary positions at the time of occurrence of eclipse। इसमें ये ग्रहणों की भी सारी जानकारियां रहती है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा या चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और उसका समय कब आरंभ होगा और कब तक रहेगा। ये सारी व्यवस्थाएं या जानकारियां इस पंचांग में होती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पंचांग हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय पब्लिश एनुअली डिफरेंट parts of the country, each one with its own characteristics, but maintaining the 5 core constituents. They can be broadly categorized into lunar, solar और solar। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के पंजाब वो है देश के हर हिस्से में जो है, हर घर में लगभग पाए जाते हैं जो इनको मानते हैं। इसका इसका स्वरूप कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है 5 एलिमेंट्स का, 5 अंगास का, वो दैट विल नॉट बी चेंज, बिकॉज ऑल द कैलकुलेशंस कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। सो the procedure may be different, or the depiction or the projection or some उसका जो स्वरूप है वो कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, लेकिन देश के हर हिस्से में जो है वो इस्तेमाल होता है। देयर आर सम एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्रास, जिनकी मदद से जो है हम समझ सकते हैं कि ये बहुत पुराने यंत्र हैं हमारे, और हम इसके ऊपर जो है कार्य करते थे अपने नक्षत्रों की जानकारी लेने के बारे में। दैट इज समृत यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश, दिग्माशा यंत्र, नाडीवाला यंत्र, दक्षिणोत्तरा भित्ति, रविशला यंत्र एंड
अदर यंत्रास। तो ये बहुत पुराने नाम है, बहुत पुराने यंत्र हैं जो कि आज भी मौजूद है, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि पुरातन लोगों ने जो है कितना कार्य इसके ऊपर किया है। जैसा कि मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, हेल्थ एंड वेलनेस इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में जो ये हमारे पुरातन काल से ही हमारे साथ है कि वेलनेस को कैसे अचीव करना है और जो है हेल्थ को कैसे अचीव करना है। वी आर नॉट रशिंग टू गेट द पर्सन क्योर्ड आफ्टर बीइंग इल, rather we followed such kind of rituals or customs in our daily life where we care ourselves from different diseases। कहने का तात्पर्य है, अर्थात हम जो अपने दैनिक दिनचर्या में जिस प्रकार से जो है भोजन लेना है, नहीं लेना है, और क्या लेना है, ऋतुचर्या यानी कि किस ऋतु में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। सो देयर आर डिफरेंट टाइम्स where you can have a particular meal or particular element in your food, in your थाली। वो डिसाइड करता था कि हम जो है बीमार ना हो, बल्कि बीमारी से हमारी दूरी हमेशा बनी रहे। सो दैट इज व्हाट द वेलनेस इज। अब इसके साथ यदि हम मानसिक अवसादों को भी हटा दें किसी रूप से, कई तरीके से, किसी तरीके से, तो फिर हम कहेंगे कि हम जो है वो शारीरिक रूप से समृद्ध हैं और स्वस्थ हैं। वो क्या है? यदि हम अपने जीवन में योग को लेकर के आ जाएं, हम अपने जीवन में मेडिटेशन को लेकर के आ जाएं, हम अपने जीवन में जो है डिफरेंट थेरेपीज को लेकर के आ जाएं, तो यही सब बातें जो है जिनके माध्यम से जो है हम वेलनेस को अचीव, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने और हमारे पुराने लोगों ने अपने आप को कर रखा था, जो कि हम कहीं ना कहीं भूल रहे थे। अब फिर से उसी को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम जो है अपने आप को वेलनेस की तरफ हमेशा लेकर के चल सकें। आयुर्वेद की बात आप जानते ही हैं कि आयुर्वेद पे कितना काम किया है भारतवर्ष ने, और इस यहाँ पर कितना काम हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयुर्वेद एंड ऑल। तो वेलनेस वहीं से ही अचीव हो गई। योग और अपने स्पेशलिटी की जब हम बात करते हैं और जो हमारे शस्त्रक्रम डीलिंग सर्जरीज और ये सब की बात करेंगे तो हेल्थ तो बहुत अच्छी रहेगी। और जब आयुर्वेद की बात करेंगे तो हमारे खान पान को हम पहले से ही इतना अच्छा रखेंगे, इतना मजबूत रखेंगे कि वो जो है व्यक्ति अपने आप को समृद्ध रख सकता है। अभी आप जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पे जो है थेरेपेटिकल मॉडलिटीज का प्रयोग किया जाता है, वेयर दीज काइंड ऑफ द प्रैक्टिसेस आर बीइंग डन टू क्योर द डिफरेंट डिजीजेस फॉर दी क्रोनिक डिजीज मीन्स जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, बहुत समय से परेशान कर रही है। वी हैड अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ the ex-chief minister of Delhi, Arvind Kejriwal ji, when he was having cough and cold for a long period of time, he used to cough every time और खांसते ही रहते थे. Then he took this therapy in the केरला में जाकर के उन्होंने एक सेंटर में वो पूरी थेरेपी ली। ही वाज बीइंग ट्रीटेड बाय दैट थेरेपी एंड ही गेट क्योर्ड, एंड आफ्टर दैट वी हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन विद हिम। तो ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव डेवलप्ड विद द नॉलेज, विद द एंशिएंट नॉलेज that is needed to be revived in a very faster manner, in a very quicker manner, so that the benefit can be given to the people of this country and to the whole world। पूरे विश्व को जो है सारी जानकारियां और सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं, मिल सकें, ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं। और वो तभी होगा जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको मानेंगे और इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द एवरीथिंग। हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद इन एंशिएंट इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे चरक संहिता जो है, द लिटरल मीनिंग ऑफ आयुर्वेदा इज साइंस ऑफ लाइफ, मीन्स हाउ द लाइफ विल गो इन अ वेरी स्मूथर वे। दैट इज एक्चुअली द वर्ड इज आयुर्वेद, यानी कि जीवन की जो है विज्ञान, जीवन का विज्ञान। तो फिर उसके बाद जो है और वेल बैलेंस्ड मेटाबॉलिकली जो फिट रहे लोग, ऐसा जो है आयुर्वेद कार्य करता है। इसके जो रचयिता हैं, इसको जो बनाने वाले हैं, द चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट हिंदू टेक्स्ट, जिसके अंदर ये सारे उल्लेख हैं आयुर्वेद लाइफ साइंस के बारे में। फॉलोड बाय सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदय, यानी कि सबसे पहले चरक संहिता, फिर सुश्रुत संहिता, फिर उसके बाद अष्टांग हृदय। इन सब में जो है आयुर्वेदिक की पूरी जानकारी मिलती है, जो कि आज भी हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और कई मेडिकल कॉलेजेस भी चल रहे हैं, और इवन वी हैव द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद।
तो ये भी हमारा एंशियंट नॉलेज ही है. इट वाज ऑल डेवलप्ड एंड इवॉल्व इन द एंशियंट टाइम व्हिच वी फॉलोड इन अ वेरी ब्रॉडर मैनर. और इन वो कंसेप्ट को हम इसलिए खत्म नहीं कर पाए बिकॉज इट गिव्स रिलीफ टू सर्टेन क्रॉनिकल डिजीजेस इन अ वेरी इजी मैनर, अगर हम उसको समय पर जो है कर सकें. हाउएवर, the I'll not say this, but means I'll also say this, that if you want a immediate relief, then you need to go for allopathic medicines. But if you had some chronic disease and you have time to cure that, then the option can be taken from allopathic to Ayurvedic, because it does not have any side effect, whereas the allopathic medicines have the side effects. और इसके ऊपर जो है, इसको बढ़ने नहीं देने में कौन कौन से लोग जो है कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं, केवल भारत की नहीं बल्कि विश्व की, ये कई बार अखबारों में और कई विभिन्न माध्यमों से हमको समझने को मिल जाता है. और आज से ही नहीं, ये कई शताब्दियों से इसके विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इसके ऊपर बहुत अच्छे अनुसंधान नहीं हो पा रहे हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं बन पा रही है. खैर, ये विषय आज का नहीं है. हमको तो थोड़ी थोड़ी जानकारी रिवाइव करनी है आपको. ऑल्दो यू हैड अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दिस, बट we are here to revive this and to motivate everyone to have the knowledge of this, and to inculcate the same to their students. वो पर्पस है पूरा. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट्स विद एन इंटरनल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि अंदरूनी तौर पर जो है पूरा प्यूरिफाई करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो आयुर्वेद इस्तेमाल करता है. फॉलोड बाय स्पेशल डाइट, herbal remedies, massage therapies, yoga and meditation. The concept of universal interconnectedness, the body constitution, that is prakriti, and a life force, that is dosha, and the primary basis of ayurvedic medicine. ये सब जो है इसके बेसिक कंटेंट्स हैं जिसके जिसके ऊपर आयुर्वेद जो है ट्रीटमेंट करता है. इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ आयुर्वेदा, उनके ऊपर बात कर लेते हैं. चरक एंड सुश्रुत जी, इन इन दो लोगों ने आयुर्वेद के ऊपर बहुत कार्य किया, जो कि आज उसका नॉलेज आज भी है. मतलब हमारे पास उसकी जो है लिटरेचर है, हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. Charak is the father of Ayurveda and father of Ayurvedic medicine. He wrote a book named as Charak Samhita on medicine, which contained the description of large number of diseases and discuss their treatment. बहुत सारी बीमारियों का उसमें उल्लेख है और उसको उससे किस प्रकार से हमको ठीक होना है, ऐसा उस किताब में लिखा गया है. और उस किताब के रचयिता हैं चरक जी. Sushruta is the most celebrated physician and surgeon in India, though he practiced during the 5th century BC. Many of his contributions to medicine and surgery preceded similar discoveries to the Western world. Sushruta devotes a complete volume of experiences to the ophthalmological disease. आंखों की नेत्र जो है विज्ञान की और उन सब के जो ज्ञान है, वो भी सुश्रुत जी के द्वारा दिया गया है. उस समय पे वो जो है एक सर्जन थे, एक फिजिशियन थे, एक सर्जन थे. इतनी सारी खूबियां उनके अंदर थी. और सही माना जाए तो 5वीं शताब्दी में जब उन्होंने इतना कार्य किया था, तो आप जरा कंपेयर करें और सर्च करें गूगल पे कि 5वीं शताब्दी में विश्व में कहीं और कोई सर्जरी या फिजिशियन या जो है आंखों की जो है ऑपरेशन किया करता था, या कोई ऐसा व्यक्ति था, तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है. दैट मीन्स दिस नॉलेज इज एक्चुअली transferred from this part to the other part, to the western part of the world, and now we are getting all the medicines from western part of the world. ये सोचने का एक विषय है, और इसीलिए हमको जो है कहीं ना कहीं वापस अपनी परंपराओं की तरफ जो है ध्यान देना है, और उसको जो है उससे जुड़ना है, अपनी जड़ों से जुड़ना है, जिससे कि हम इन सब चीजों का लाभ लेकर के बहुत सारी समस्याओं से अपने आप को बचा सकें. धन्वंतरी इज द गॉडेस ऑफ दिस मेडिसिन. और इसका बहुत सारा उल्लेख जो है अथर्ववेद में भी हमको प्राप्त होता है, जिसमें जो है मेडिसिन की प्लांट्स की और उसकी बात करें तो ये अथर्ववेद में भी हमको इसकी जानकारी मिलती है. मैं कुछ और विषयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कहाँ पर जो है भारतीय ज्ञान परंपरा जो है इतनी मजबूत है, और किस किस क्षेत्र में कार्य किया गया है भारतीय पुरातन लोगों ने, जो कि है फिलोसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र. कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर कार्य किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. वैशेषिका, न्यारा, समख्या, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तरा मीमांसा. दीज 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफीज, यानी कि 6 सिस्टम इन्होंने उल्लेखित किए हैं हमारे पुरातन लिटरेचर में, या पुरातन लोगों ने
तो उन्होंने पूरे दर्शन शास्त्र को 6 भागों में बांटा है, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने अलग अलग इसके ऊपर कार्य किया, उन नामों को अब हम जानते हैं। दीज 6 systems ऑफ philosophies आर सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय सेजेस कोनडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जामिनी एंड व्यास। तो इन लोगों ने इसके ऊपर कार्य किया है और जिसकी बात की है और जिसके ऊपर चर्चाएं की गई हैं। साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की यदि बात करें तो हम समझ सकते हैं कि योग और मेडिटेशन, लाइफ अफर्मिंग स्पिरिचुअलिटी, इसकी अगर चर्चा कहीं की जाती है तो वो जो है योग में की जाती है। और योग ही वह चीज है जो मानसिक अवसादों को से हमको दूर करता है या हमको मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारे मानसिक विकार जो है वो उनसे हमको मजबूती से खड़े होने में मदद मिलती है, या हम उसके शिकार नहीं होते हैं। तो यानी कि मनोविज्ञान की बात करें तो इसके ऊपर भी जो कहीं ना कहीं जब ये चीज देखी होंगी, समझी होगी, तो फिर उसके ऊपर कार्य किया गया होगा। तो साइकोलॉजी पे भी बस इसको इंटर रिलेट करने की जरूरत है। इसीलिए आईकेएस डिवीजन का ये मोटो है, और वो है, कह रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को जो है बढ़ावा देना है, उसकी बात करनी है। तो जब साइकोलॉजी और योग और इन सब की चर्चाएं करेंगे और जब ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होगा तो डेफिनेटली वी विल एबल टू कम विद सम फैक्ट्स that will help a lot in to the people of this world, जो कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मानसिक अवसाद एक सबसे बड़ा रोग है जिसकी जिसमें कई बार मेडिसिन भी काम नहीं करती हैं, कई बार और बहुत सारी चीजें काम नहीं करती हैं, थेरेपीज काम नहीं करती हैं। तो वहां पर जो है हमको कुछ अगर अच्छी चीज हमारे पुरातन ज्ञान में है तो उसको हमको डिग आउट करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको रिसर्च करना है, और फिर उसकी मदद से हम जो है मानव सभ्यता को और सभी लोगों को जो है समृद्ध कर सकें, मजबूत बना सकें। ऐसा जो है प्रयास करने का उद्देश्य जो है वो रखा गया है, मिशन रखा गया है, विजन रखा गया है आईकेएस डिवीजन के द्वारा। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो चाणक्य एक बहुत बड़ा नाम है, जो 5वीं शताब्दी के आसपास ही थे शायद, जिन्होंने नीति शास्त्र उस समय पर जो है लिख दिया था, जो आज भी कई कई लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। बस अफसोस की बात यह है कि ये हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में इसको जो है नहीं लिया गया है। हाइफा करके एक जगह है इसराइल में, उस समय पे जो है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था शायद, तब यहाँ से एक सेना की बटालियन भेजी गई थी। वहां पर जो है हमारे भारतीयों ने युद्ध कौशल का बहुत साहसपूर्ण परिचय दिया था। दे फॉट वेरी वेल दैट इन हाइफा ऑफ द वन ऑफ द एरिया ऑफ इजराइल, आई थिंक, where he took that land from the Britishers for the Israelis। तो मैं वहां पर ये नहीं कहना चाह रहा कि क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो लड़ाई है, वो जो युद्ध हुआ था, बहुत कम लोग थे इधर और बहुत ज्यादा लोग थे उधर, बहुत कम साधन इधर थे, इक्विपमेंट्स कम थे, आर्टिलरीज कम थी, एम्युनिशंस कम था। देन ऑल्सो द पीपल ऑफ दिस कंट्री, द brave people of this country, they fought in such a way that they took over the Britishers and took that land from them। वो उनके एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, इजराइल उसको पढ़ाता है। दे टीच देयर चिल्ड्रंस how that war was fought by the Indian contingent, Indian company or battalion। But we have not taken even a single example of our warfare where the people of this land have sacrificed their life for something, for so many things, so many times। तो उनको हमको बुक्स में भी लेके आना है, अपने बच्चों को बताना है, जिससे वो मोटिवेट हों और जो है आगे हमको हमेशा सचेत रहने की जो है उसमें जानकारियां प्राप्त हों। सो दिस इज व्हाट अबाउट द नीति शास्त्र एंड द चाणक्य एंड द पॉलिटिकल साइंस एंड अदर थिंग्स। लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज संस्कृत। People from the world, I am not saying this, people from the world, I have heard so many videos and so many these YouTuber की बात नहीं है, scientifically उन्होंने prove किया है। They are saying that the origin of all the language is actually from Sanskrit, but we are not saying this because we have not researched that, we have not done any research in this field। But people from the world, they are saying, now accepted by a number of people, they are saying this कि हाँ, जो जो उनकी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत में से निकली हैं, यानी कि हमारी जो भाषा है वो भी संस्कृत में से ही है, उनकी भी भाषाएं जो है संस्कृत में निकली। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हम लोग उस वक्त भाषाई रूप से भी समृद्ध थे। we were matured enough that we had a very good language in ancient time also, and that language
when went to other parts of the world, you can see, you can search in the Google and you will find the answer, and you will get so many videos on this, and where you can justify it, and it is being justified, and you can satisfy yourself what I am saying. I am not claiming this, but still work is needed to be done in this field, and to prove this more proudly and more efficiently, and बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रूव करना है. Now next point is town and country planning. Town and country planning in this field, the वास्तु शास्त्र, जो कि आज भी कई जो हमारे आर्कियोलॉजी, कई जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं. Whenever you went to these people, they will ask you whether you want your home to be constructed in according to the Vastu Shastra or not. So that Vastu Shastra are also developed in the ancient period of time. So these kind of knowledge we people have since that time. तो ये तो हमको फिर से जो है इसके ऊपर अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है, और अपने अध्ययन और अध्यापन में इसको लाने की आवश्यकता है. And we have a very good example, not the example, very good universities in ancient time also. Takshila, 600 BC to 500 BC. Nalanda University, 425 AD to 1205 AD. Vikramshila University, 880 to 1203 AD. Vallabhai University, 600 AD to 1200 AD. Jagdala University, 1084 AD to 1207 AD. Nagarjuna Vidyapeeth, 600 AD. And there are so many examples that people from across the world, they used to visit the Takshila University, where they have learned so many things, and they went back to their country and they have written a book. And now we are justifying our facts with the help of those books which are being written by the foreign writers or the foreign students who came to this country and went back and written these books. So, but we need to find out some more information about our ancient period or ancient time or ancient knowledge, so that we can say proudly, and we will feel that we are still attached to our original roots. We are not moving अवे फ्रॉम आवर रूट्स. हम अपनी जड़ों से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनी जड़ों को दोबारा मजबूत कर रहे हैं. और वो कैसे कर सकते हैं? जब हम अपनी बात पूरी मजबूती के साथ, पूरे शोध के साथ जो है लोगों को बताएं, तब फिर आप देखेंगे, हो सकता है कि हम जब प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने की शुरुआत करें, तो वहां पर हम किसी ऋषि का नाम लिखें, किसी मुनि का नाम लिखें, उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने उस पर बहुत अच्छा कार्य भारत में किया है, और उनके जो है श्लोक यहाँ पर लिखें. श्लोक ना लिखें, उसका ट्रांसलेशन वे में जो है उसको हम परिभाषित कर सकें. और ये तभी हो सकता है जब अच्छे अच्छे हमारे पास जो है बुक्स होंगी, और रेफरेंस मटेरियल्स होंगे, लिटरेचर हो गए, तभी ये पॉसिबल है. तो ये सारे जो लिंक हैं, वहां से मैंने ये सारा अपना आज का सेशन बनाया है, इंफॉर्मेशंस ली हैं. सो विद दिस नाउ, थैंक्स फ्रॉम माय साइड. कुछ और मैं बताना चाह रहा हूँ. बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जो है ऐसे वो सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, इसके ऊपर कार्य स्टार्ट हो गया है. और अगर आप कहें तो मैं इसमें से किसी एक को जो है लेकर के आपको दिखा देता हूँ. एक मिनट. हिमाचल यूनिवर्सिटी. बस 5 मिनट और लूंगा. मैं देख रहा हूँ समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये आपको थोड़ा दिखाने की जरूरत पड़ेगी. स्टॉप शेयरिंग. तो जैसा कि मैंने बताया कि वो कुछ लिंक जहां से मैंने इंफॉर्मेशन ली, नॉलेज ली, और कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस विश्वविद्यालय में जो है इसको अपने करिकुलम में जो है ऐड कर लिया गया है. आई एम शेयरिंग दिस. वेयर इज दैट? दिस वन. आई थिंक नाउ इट इज बीइंग शेयर्ड. Just answer from your side. Is it visible? Yes, sir. Okay, fine. Visible.
So this is one of the example. With this example, I would like to give you an idea that how the university has taken up this IKS system, and they have developed a course and curriculum for their students, and it is being done almost in all, or it will be done in almost every university in the coming time. So हो सकता है आपके विश्वविद्यालय में भी आरंभ हो गया हो, जिसमें यह है कि कोर्स कोड आईकेएस है, क्रेडिट्स 2 क्रेडिट का ये कोर्स है, कोर्स नेम इज अ बेसिक कोर्स ऑफ ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम, 1 सेमेस्टर, और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल वो लेके आया हूँ कि किस तरीके से जो है उनका सिलेबस है, हाउ दे हैव अनाउंस्ड द आईकेएस टू बी इंट्रोड्यूस्ड, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर मेन करिकुलम, इनटू देयर कोर्सेज। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बड़ा है, थोड़ा सा हम बात नहीं करेंगे। कोर्स कंटेंट क्या है वो आप देख लीजिए, क्या क्या इसमें कोर्स कंटेंट लिए गए हैं। मैं समझता हूँ काफी चीजें जो है हमने इसमें कवर करी। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये सेशन एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन देना बहुत मुश्किल है 1.5 घंटे में, बट आई हैव ट्राइड अ लॉट टू प्रोवाइड यू दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसमें यूनिट 1 है भारतीय सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज सिस्टम, यूनिट 2 है आर्ट्स लिटरेचर एंड स्कॉलर्स, जिसके अंतर्गत जो है आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी उसमें दिया जाएगा। यूनिट 3 है साइंस एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, यूनिट 4 है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर, और यूनिट 5 है लाइफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। So you can see our 2 credit course have been developed or started by the Central University of Himachal Pradesh. With this, you have understood that it has been already started, and will be going to start in coming days in different universities. So it's all from my side. Now, if anyone have any question or query, or you want to share something, or you want to add something, please let me know. I'm open to all. Thank you very much from my side. Thank you, Omji. I am not audible properly. I could not hear you, sir. Your network is not good, I think. Hello, thank you, sir, for a beautiful session. Okay, Thank you, thanks. sir. Please. Okay, fine. हेलो सर। Yes, sir. हाँ, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर यहाँ पे दिया। जी सर। मेरा ये क्वेश्चन है सर हाँ, कि अभी जो एंशिएंट मेथड के बारे में आपने जो बताया, सर। अभी जो मॉडर्न मेथड से और एंशिएंट मेथड आपने जो बताया वो कितने इफिशिएंट हो गए मॉडर्न मेथड के बारे में हाँ, अभी? देखिए, नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न आते हैं एक्चुअली में दिमाग में, और ये आपके नहीं, यहाँ पर बैठे हुए काफी लोगों के मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे। मैं उसका उत्तर देने का और आपको बताने का प्रयास करूंगा अपनी ओर से। देखिए, मॉडर्न मेथड में हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि हम वापस उसकी तरफ नहीं जा सकते, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने बीच में कई जगह जोर दिया है, जो आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं सुलझा पा रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था सिंगल the nuclear family, how we are living in the joint family where we are taking care of even the old age people, our elders, जबकि वो वहां पर नहीं है, तो हम उस सिस्टम को क्यों फॉलो करें? ये इस तरीके की कुछ मानसिक अवसाद हैं, कुछ जो थेरेपीज हैं, कुछ हमारी मेडिसिनल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं लाभकारी होंगी अगर हम अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से अपने खान पान की व्यवस्था सही रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो फिर हम किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड उसको नहीं बोलता करने के लिए, बट आवर एंशिएंट सिस्टम सेज दिस। तो क्या हम उन चीजों को फॉलो ना करें? क्या हम उसके ऊपर शोध ना करें और उसको फिर से प्रूव करें? मैं ये नहीं कह रहा कि अब हमको टायर फिर से बनाना है, मैं फिर से ये नहीं कह रहा कि हमको व्हीकल फिर से बनाना है और अपने जो है वेद में हमको ढूंढना है कि उसमें जो है कार कैसे मेंशन है उसको रिसर्च करें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट माय डियर। We need to go beyond that, and there are several things which are being followed since then that time, and still they have their validity in this time also. और उन्हीं चीजों को हमको आगे लेके आना है, और उन सब चीजों को समझने और जानने के लिए कहीं ना कहीं हमको उससे जुड़ना पड़ेगा, उसकी बात करनी पड़ेगी, उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, तभी हम ऐसा हो सकता है कि हम उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से लें, पॉजिटिवली लें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जो है अपने बच्चे को जो है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए, बिकॉज यू आर having a very good position in the society, and you can teach your student to any convent school. You can pay the fees. You are able to pay the fees. But
there is some mental pressures which develops among the students in their early childhood age while getting the knowledge or teaching in other language. अगर वो सेम नॉलेज में होगी तो उसका जो मानसिक विकास होगा वो मैं समझता हूं कि दूसरे बच्चे से ज्यादा अच्छा होगा। और अभी भी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर बच्चा स्वस्थ है, उसको करने में माहिर है तो उसको कर सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको उनको देने की आवश्यकता है, उनको बोलने की और समझाने की आवश्यकता है जो कि इसको ले नहीं सकते, इसको कर नहीं सकते। मीन्स अवर रूरल एरियाज, वहां पे अगर हम जबरदस्ती अंग्रेजी थोपेंगे तो आप देखिए कि उनको कितनी समस्या आती है। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विवाद है अंग्रेजी माध्यम के ऊपर के जो है, और इसमें जो है कल ही रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें भी वो विवाद जो है बहुत लंबे अंतराल तक चलता रहा, जब लोगों ने ये कहा कि जो है हिंदी माध्यम के छात्रों का जो रिजल्ट है वो काफी कम आता है, हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी लैंग्वेज। और जबकि जो इंग्लिश लैंग्वेज से जो बच्चे जो ऑप्ट करते हैं उनका रिजल्ट जो है ज्यादा बच्चों का अच्छा आता है और दे गेट सेलेक्टेड। मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है, मैं उस कंट्रोवर्सी के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, मैं दूसरी चीजों के ऊपर भी नहीं जाना चाहूंगा। बट द पीपल और द स्टूडेंट who used to go for this repeated competitive examination to Delhi or to any other city, they feel somewhere very under privileged that they don't know the English. They are not able to give that exam into that English language. If I would have given with this capability and capacity, then I may have got selected. ये भी धारणा उनके अंदर अंतर्गत आती होगी। तो मेरा विचार यहाँ पर यही है, शायद आप इससे सहमत हो कुछ हद तक। सारी चीजों को दोबारा से शोध करके बनाना और करना ये संभव नहीं, और ऐसा करने की हमको आवश्यकता भी नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है। थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, और ऐसा कई बार जो है मेरे इस सत्र में प्रश्न आता है कि भाषा पे क्यों किया जाए, इसलिए मैंने भाषा को भी उदाहरण ले लिया कि भाषा पे क्यों किया जाए। भाषा ही नहीं है सर, अभी आपने बात की थी कि वास्तु शास्त्र के बारे में, जी जी। लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हर एक व्यक्ति वास्तुशास्त्र से अपना घर जो है वो नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है अपने एंशिएंट मेथड जो हम अप्लाई नहीं कर सकते अभी। नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर भी रहे हैं। आप ऐसा भी नहीं कह सकते। हर एक जन तो नहीं कर सकते। There are people who are paying and they are means getting the architecture of their houses and according to the वास्तु शास्त्र। मतलब अपनी अपनी इच्छा है, कोई थोपने और देखिए कंपलसरी तो है नहीं। नो वन इज रनिंग बिहाइंड यू विद अ स्टिक, नो यू हैव टू मेक योर हाउस अकॉर्डिंग टू द वास्तु, नो इट इज नॉट दैट। वेयर एज there are several municipal corporations, they had some sort of regulations that you have to leave such land, open land, and only after that you can construct your home। वो तो है ना, वहां पे तो नियम है, रूल है। लेकिन वास्तु के साथ आप बनाइए, ऐसा तो कोई नियम तो नहीं है। वास्तु आपको मानसिक जो है जुड़ाव महसूस कर सकता है, आपको मानसिक संतोष दे सकता है, इस तरीके से। इट इज नॉट देयर इज नो कंपल्सन माय डियर, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि हमारे जितने भी पुराने बिल्डिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वेज हैं, उसमें भी ये पाया गया है कि ये वास्तु के अनुसार बनी थी। तो वास्तु के अनुसार बनाने से हो सकता है कि उनकी जो है उनकी जो वैलिडिटी है या उनका जो प्रकार है या उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होने का एक रीजन है वो मिल सकता है। वास्तु से अगर बना रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का उसका जनरेशन उसमें होना शुरू हो जाता है। ऐसा मान्यताएं हैं, ऐसा माना जाता है, और जो लोग मानते हैं वो उसको करते हैं। और जो नहीं करना चाहता ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। But this is the truth that if you have your house according to the Vastu Shastra, there may be a positive generation of positive energy into that, क्योंकि सभी जगह अपने अपने स्थान पर हैं, जो कि गणना है एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से की गई हैं, पुराने एंशिएंट नॉलेज एंशिएंट लोगों ने जो की है। मानना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। Sir, thank you very much for having interaction with me. I hope आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को उनके उत्तर भी मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। So Thank you, sir. thank you Thank you, sir. Thank you for your excellent
guidance in ICAS. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. So with this note, once again, thank you for the organizers of this MMTTC and the respected director, Professor Atik sir, for giving me this opportunity to have interaction with you all. So may I leave now? May I stop this meeting from my Yes, sir. side? Yeah. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. Okay. Okay. Done. Done.